Good evening, kids. Today we had JEE Mains 2025, the 22nd January, the morning shift. The paper is moderately easy. Many are saying it is difficult, but it's moderately easy. And the same 2003 or 2024 model. Little bit more some formulas and you have to do calculations. But the rest all everything is same. यहाँ पे जो भी आप कल अगला like 23, 24, 25, 28, 29 शिफ्ट लिख रहे हैं, डरने का कोई बात नहीं है. तो द पेपर लेवल वही 2023, 24 का लेवल ही है. सो द सेम स्ट्रेटेजी, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड द फॉर्मूलाज. अगर ये दोनों आपके पास रहे तो द कौन सा भी शिफ्ट रहने दो, यू कैन मैनेज कंफर्टेबली. तो ये जो मॉर्निंग शिफ्ट हुआ आज का 2025 जेई मेंस 22 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट, इसका हम पेपर डिस्कशन करेंगे. तो विल गेट ए बेसिक आइडिया. सो कल जो भी एग्जाम लिख रहे हैं, सो आई सजेस्ट यू लाइक आप फॉर्मूलास याद कर लो, सो डेफिनेटली हेल्प यू. और जो भी लास्ट शिफ्ट है 28, 29, उन सभी बच्चों से विनती है कि आप फॉर्मूलास रिवाइज करो एंड डोंट बिलीव इन एनी रूमर्स. जो अब तक दो साल में तुम जो लाइक मेहनत कर रहे हो, that only will help you a lot in exams. So don't waste time in watching unnecessary rumors here and there. Focus more on concept clarity and the formula memorization. तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे. Okay बच्चों, like we are going to discuss the JEE Mains to 2025, 27 जनवरी. आज का जो पेपर हुआ 22 जनवरी का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर डिस्कस करेंगे. एंड बहुत कंप्लीट क्वेश्चंस, करीब करीब मेरे पास 23 क्वेश्चंस है. वो 23 क्वेश्चंस का सारे सॉल्यूशंस हम आई एक्सप्लेन यू वेरी क्लियरली. ऑल दिस आर मेमोरी बेस्ड. ओके फाइन. So thanks for your great support. So we'll start with the paper discussion. This is the based on the surface tension. There are two bubbles are there. एक बबल हुआ, इसका रेडियस, और एक बड़ा वाला है. Okay, I'll draw like this. ये जो छोटा बबल है will come like this. ये तो आई थिंक सभी को ये फॉर्मूला याद रहेगा. This will be shifted more into the larger bubble, no? यहाँ पे हम ये कर देंगे. So there's a very famous problem in surface tension. इसका रेडियस कितना है? R2, 5 सेंटीमीटर. इसका रेडियस कितना है? R1. ये जो बाउंड्री है, इसका रेडियस कितना होगा? This will be कैपिटल R लिख देंगे. ये जो दिस इज द बाउंड्री है. इसका बाउंड्री का रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो यहाँ पे हम प्रेशर कैलकुलेट करेंगे. प्रेशर इनसाइड द स्मॉलर बबल P1, प्रेशर P2. ये जो है, सो दे आर इन एयर एटमॉस्फेयर. इसका प्रेशर आउटसाइड P0. So what is the excess pressure or what is the pressure in the bubble? P1 equal to P0 plus 4T by R1. P2 equal to P0 plus 4T by R2. Then ये वाला हुआ कॉन्केव सरफेस एंड इधर का सरफेस हुआ कॉन्वेक्स. और व्हाट इज द लाइक एक्सेस प्रेशर का कॉन्सेप्ट? इट विल टेल यू दैट pressure on concave side will be more than on convex side. So P1 equal to P2 will be 4T by R. P1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. P0 4T R1, P0 4T R2 plus 4T R.
So 1 by R1 minus 1 by R2 equal to 1 by R. R का वैल्यू R1 R2 by R2 minus R1. सब्स्टिट्यूट करने पर R1 का वैल्यू 3, R2 का वैल्यू 5, 5 minus 3, 15 by 2, 7.5 centimeter. Okay, fine. So this मेरे पास options नहीं, शायद maybe it's based on option 7.5 centimeter, B 6 centimeter, C it will be around 2 centimeter, option D 15 centimeter, option A ले लेंगे. This will be our answer 15 centimeter. So like एग्जाम में अगर आपको सरफेस टेंशन याद रहे तो डायरेक्टली आई थिंक आपका टीचर नोट्स निकालो, दिस फॉर्मूला विल बी देयर. तो आप अपना टीचर नोट्स रिवाइज करेंगे, रियली वेरी बेनिफिशियल. जो भी कल एग्जाम लिख रहे हो, टेक हेल्प ऑफ टीचर नोट्स, वेरी वेरी यूजफुल ना. आई थिंक सभी इंस्टीट्यूशन में टीचर सफिशिएंशन का फॉर्मूला पढ़ा है, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर चुके होंगे. दिस इज अ वेरी सिंपल टॉपिक एंड हर एक इंस्टीट्यूशन में ये सब पढ़ाते हैं. एंड एनीबडी जस्ट नो दिस फॉर्मूला यू कैन मैनेज. एग्जाम में आपको इतना सब सोचने की जरूरत नहीं है. डायरेक्टली द प्रेशर ऑन द प्रेशर जो स्मॉलर बबल में वो ज्यादा रहता है बिगर बबल से, और ये कॉन्केव साइड हो या कॉन्वेक्स साइड हो. सो प्रेशर ऑन कॉन्केव साइड बी मोर देन ऑन कॉन्वेक्स साइड बाय 40 by r. R will become radius of curvature of this common boundary, common surface, radius of curvature. अगला क्वेश्चन ले लेंगे. This will be a closed organ pipe and an open organ pipe are in resonance with the same tuning fork. The closed organ presents ninth harmonic and the open organ presents fourth harmonic. If the length of closed, then the length of the open organ pipe. यहाँ पे organ pipe, closed organ pipe. यहाँ पे हम एक ट्यूनिंग फोक लगा देंगे. नाइन्थ हार्मोनिक का क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और एक लंबा खींचेंगे. दिस इज अ ट्यूनिंग फोक एंड ओपन ऑर्गन पे रेजोनेंस इन द फोर्थ ऑर्गन पाइप. सेम ट्यूनिंग फोक, ए वाला हुआ ओपन ऑर्गन पाइप. इसका कितना हार्मोनिक नंबर है? फोर्थ हार्मोनिक. फोर्थ हार्मोनिक मीन्स यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट वेव डाल देंगे, डिस्प्लेसमेंट स्टैंडिंग वेव दिखा देंगे. फोर्थ हार्मोनिक मीन्स यहाँ पे आपको कितना लूप्स मिलेगा? 4 loop, 2 half loops, one this one. Now ninth harmonic. What is the general formula? Closed end organ pipe का ninth harmonic है. So F1 formula हुआ 2n minus 1 B by 4n1. Ninth harmonic, closed end organ pipe का ninth harmonic. Ninth harmonic means इसमें even harmonics absent रहते हैं. So harmonics 1, 3, 5, 7, 9. ये हुआ नाइन्थ. इसको हम फिफ्थ नहीं बोलते, नाइन्थ हार्मोनिक बोलते हैं. इसको फर्स्ट फंडामेंटल, फर्स्ट ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन, थर्ड और फोर्थ ओवरटोन. नाइन्थ हार्मोनिक और फोर्थ ओवरटोन बोथ आर सेम. तो यहाँ पे हम फोर्थ ओवरटोन से इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. 2 into 4 minus even ninth harmonic means it will become 5 B by 4 L1. तो इसका वैल्यू हुआ 9V by 4L1. ये जो ट्यूनिंग फोक है सेम है, F एंड F. इसका लेंथ कितना है? L1. तो कितने लूप्स यहाँ पे रहेंगे? 1, 1, 2, 3, 4, 5, 4 and हाफ. हाफ लूप, हाफ लूप, हाफ लूप, 5 and हाफ लूप. और एक लूप यहाँ पे डाल देता हूँ. 2, 3, 4.
ओके फाइन, इसका लेंथ कितना है? इसका लेंथ हुआ L2। तो व्हाट इज F इज इक्वल टू, इसका हार्मोनिक नंबर कितना है? 4NV/2L2। इसका हार्मोनिक नंबर कितना हो? 4V/2L2। सेम ट्यूनिंग फोक, दोनों का ट्यूनिंग फोक सेम है, तो हम इक्वेट करेंगे इसको, लाइक दिस विल बी 9V/4L1 इक्वल टू 4V/2L2। द लेंथ ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का कितना है? 10 है, सो 9/4 इंटू 10, 2/L2। L2 का वैल्यू विल बी 80/9 सेंटीमीटर। सो आपको ये याद रहना चाहिए, closed end organ pipe, only odd harmonics will be present, whereas for open end organ pipe, both even as well as odd will be present. Waves and sound, like इस particular unit से एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे कंप्लीट वेव्स एंड साउंड हमें एक ही क्वेश्चन आ रहा है। ऑलरेडी अब क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप के बारे में पूछा है, बाकी बचे सो क्या है? साउंड और थोड़ा लाइक ए बीट्स, the next interference, then standing waves on a wire, propagation of a wave on a string. तो कल जो भी लिख रहे और बाकी शिफ्ट जो भी लिख रहे, ये बचे सो जो भी है, इफ टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राई टू रिवाइज देम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे। फाइंड द रेशियो ऑफ हाइट्स इन द फर्स्ट एंड लास्ट सेकंड ऑफ अपवर्ड जर्नी। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, लाइक फाइंड द रेशियो ऑफ हाइट्स इन द फर्स्ट एंड लास्ट सेकंड ऑफ जर्नी। देयर इज अ प्रोजेक्टाइल is projected with a speed u 60 meter at an angle 30 degree with horizontal. Is asking to calculate the find the ratio in the first and last second. So what do you mean by first and last second? So यहाँ पे हम प्रोजेक्टाइल का डायग्राम डाल देंगे। फाइंड द रेशियो, यहाँ से हम प्रोजेक्ट करते हैं एट एंगल 30 डिग्रीज। व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट? टाइम ऑफ फ्लाइट हुआ 2 sin 30 degree by g. This is the theta, this is the speed of projection, so 2 into 60 into 1 by 2, 10, 6 seconds. जब at 1 second और at 5 seconds, इसका जो I पूछ रहे हैं H1 and H2, so then H1 is equal to U sin, डायरेक्टली ये जो फॉर्मूला हम यूज करें, U sin theta t minus GT square, 60 1 by 2 1, 10 by 2 1 square, so 30, so ये हुआ 25 मीटर। H2 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, H2 इक्वल टू U sin थीटा t माइनस GT स्क्वायर। U का वैल्यू 60 sin 1 by 2, टाइम कितना है? 5 सेकेंड्स। ये जो हुआ T2 T1, 5 10 by 2 5 स्क्वायर। इसका भी कैलकुलेट करो, 25 मीटर। So what is the ratio of H1 by H2? H1 by H2, this will be how much? 25, so like a 1 meter. Fine. Huh? Very simple problem. Thoda like a is asking about the ratio of heights attained. So question thoda find the ratio of heights attained by projectile in first and last second of upward journey. Yeah, upward journey है ना। अपवर्ड जर्नी का तो मैक्सिमम यहाँ पे 3 सेकेंड्स हुआ, 0, और एक लास्ट सेकेंड ऑफ अपवर्ड जर्नी, ये वाला तो 2 कर लेंगे इसको। इसका T नॉट समथिंग रख देंगे T नॉट,
टी नॉट का कितना हुआ, 2 स्क्वायर, तो इसका वैल्यू कितना हुआ, 16 माइनस 20, ये हुआ 40, तो 25/40, दिस विल बी 5/8 मीटर, समथिंग इस तरह का है. सो लाइक ए अपवर्ड जर्नी, दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने सोचा था ये वाला, इट्स अपवर्ड जर्नी लाइक इट. तो एट टी को टू जीरो, यहाँ से हम प्रोजेक्टाइल को देख रहे हैं, एक स्टोन, वी आर थ्रोइंग द स्टोन. 1 सेकेंड में यहाँ तक ए हाइट अटेंड हो जाता है. नेक्स्ट अनदर, after 2 seconds it will be there, 3 seconds it will come, so this will become last 1 second of upward journey. ए वाला निकाल देंगे, सम एच कर देंगे, लास्ट सेकेंड ऑफ अपवर्ड जर्नी. ए वाला हुआ लास्ट सेकेंड ऑफ अपवर्ड जर्नी, यहाँ से यहाँ तक 1 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक 1 सेकेंड, दिस विल बी लास्ट सेकेंड ऑफ अपवर्ड जर्नी. थोड़ा बहुत दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मैं नेग्लेक्ट किया तो इट मे हैपन, लिटिल बिट वी हैव टू बी अलर्ट. नो, ये वाला क्वेश्चन, find the heat required in the process to convert this 10 power of minus 3 kg ice at minus 10 to into steam at 110 degrees Celsius. इसका what is the 0 point, what is the mass of ice, 10 to power of minus 3 kg, इसको हम ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे. 1000 ग्राम कितना हुआ, ये 1 ग्राम हुआ. 1 ग्राम ऑफ आइस, इसको हम फ्रॉम माइनस 10 टू, इसको हम 110 डिग्री सेल्सियस एट स्टीम, सो मच ऑफ हीट रिक्वायर्ड. यहाँ पे आपको डायरेक्टली फॉर्मूला Q1 फर्स्ट, व्हाट वाज द इनिशियल टेम्परेचर आइस का, -10 है, तो इसको हम -10 से जीरो करने के लिए कितना हीट सप्लाई करना चाहिए, मास ऑफ आइस, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, 0 माइनस ऑफ -10, मास ऑफ आइस 1, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस 1/2 और 0.5, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस. डेटा विल बी देयर इन एग्जाम, डरने का कुछ जरूरत नहीं. तो देन दिस विल बी 10, तो ये हुआ 5 कैलोरीज. हम जो वैल्यू लगा रहे हैं, दिस विल बी इन कैलोरीज पर ग्राम. देन बाद में Q2 कैलकुलेट करेंगे. Q2 इक्वल टू मास ऑफ आइस इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. मास ऑफ आइस कितना 1, लेटेंट ऑफ ई विल बी 80, सो 80 कैलोरीज. ये जो 1 ग्राम ऑफ आइस, इसको 0 डिग्रीज, जीरो आइस एट 0 डिग्रीज, इसको टू कन्वर्ट इनटू वाटर एट 0 डिग्रीज, तो 80 कैलोरीज चाहिए. बाद में Q3 इक्वल टू will become water, specific heat of water, इसका टेम्परेचर फ्रॉम 100 टू 0, इसको इंक्रीज करने के लिए 1, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 कैलोरी पर ग्राम इंटू 100, सो ये हुआ 100 कैलोरीज. बाद में Q4 टू कन्वर्ट इनटू स्टीम, मास ऑफ water into latent heat of vaporization, 1 into latent heat of vaporization is 540 calorie per gram, 540 calories. ओके फाइन. इसका बाद में स्टीम के लिए Q5 इक्वल टू मास ऑफ स्टीम, स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम, टेम्परेचर फ्रॉम 100, 110 टू 100, तो इसका वैल्यू ऑफ 1, स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम करीब करीब 0.5 है, 0.48, we can take approximate 0.5 into 10, so इसका हुआ 5 calories. इसको भी ऐड कर, like we'll add up all this, 5, 85, 185, 185, 190, 190 और 540, 0, 3, 1, 1, 6, 7, 730 calories. This will be your answer. ये तो कॉन्सेप्ट हुआ कैलोरीमेट्री, बेस्ड ऑन कैलोरीमेट्री. ओके, अगला क्वेश्चन ले लेंगे. ये थोड़ा एडजस्ट कर लो मैं. फाइन.
A dielectric slab is inserted. A dielectric slab is inserted. Find the delta U. Change in charge on the capacitor. Change in energy stored in capacitor. Delta Q. Change in फाइंड डेल्टा यू डेल्टा क्यू. यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन यहाँ पे डेल्टा यू बाई डेल्टा क्यू या रेशियो ऑफ चेंज इन एनर्जी पता नहीं, सो विल वर्कआउट ऑल द थिंग्स. इनिशियली इसका कैपेसिटेंस के है. जब हम डायलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करेंगे, यहाँ पे हम एक डायलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है इसका, के वैल्यू. देन व्हाट इज द चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर. तो पहले इसका चार्ज कितना हुआ, क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट. क्यू नॉट का वैल्यू कितना, C into EMF of the battery, let it be E. C into E, so this will be 100 C. Then जब हम डायरेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करते हैं, इसका कैपेसिटेंस चेंज हो जाता है. सो कितना, लाइक अर्लियर C नॉट ले लेंगे, तो कैपेसिटेंस कितना हुआ, के सी नॉट, और दिस विल बिकम 2 C नॉट. सो यहाँ पे चार्ज कितना हुआ, नो, C into E. सो कैपेसिटेंस कितना, 2 C नॉट into 100. तो ये वाला हुआ 200 C नॉट. देन रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड, यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड U1 ले लेंगे, ये U2, U1 बाय U2. फाइंड डेल्टा U. डेल्टा U कैलकुलेट करेंगे. सो डेल्टा U शुड बी इक्वल टू U2 माइनस U1. U2 का वैल्यू कितना है, एनर्जी का वैल्यू Q स्क्वायर बाय 2, कैपेसिटेंस कितना 2C, माइनस ये वो Q नॉट स्क्वायर बाय 2C नॉट. तो Q स्क्वायर वैल्यू विल बी 200 C नॉट होल स्क्वायर बाय 2. C का वैल्यू कितना है, 2C नॉट, माइनस Q नॉट स्क्वायर बाय 2C नॉट. ये 400 बाय 400 माइनस 1 बाय 2 Q नॉट स्क्वायर बाय C नॉट. इसका चेंज इन चार्ज कैलकुलेट करेंगे. चेंज इन चार्ज कितना हुआ, Q माइनस Q नॉट. Q का वैल्यू कितना, 200 C नॉट, ये 100 C नॉट, ये हुआ टोटल 100 C नॉट. अब जो जो भी पूछ रहे हैं, आई थिंक मे बी इज आस्किंग अबाउट द डेल्टा U बाय डेल्टा Q. मे बी डेल्टा U बाय, मे बी यहाँ पे इनिशियल फाइनल चार्ज का रेशियो पूछ रहे हैं, और मे बी इट इज U2 बाय U1. U2 का वैल्यू कितना है, Q स्क्वायर बाय 2C नॉट. मे बी इट्स रेशियो है. So Q square will be 200 C naught whole square, ये हुआ 2C naught. 2 भी कैंसिल हो जाता है. Q naught का वैल्यू, Q naught will be 100 C naught whole square by 2C naught. ये 2 कैंसिल हो जाता है. तो दिस विल बी कितना आपको, दिस विल बी 100 0 zeros कैंसिल. सो यहाँ पे 4 by 2 मिलेगा रेशियो. अगर if is asking about ratios of initial final potential जी, ओके. अगर चार्ज के बारे में पूछ रहा है तो ओके फाइन, वो भी हम कर सकते हैं. Q बाई Q नॉट, Q का वैल्यू कितना है, 200 C नॉट, 100 C नॉट, वो भी 2 हो जाता है. तो देन इट शुड बी रेशियो, ये वाला Q2 बाई Q नॉट, ये U बाई U नॉट. और ये भी हो सकता है लाइक दिस, लाइक कैपेसिटर को, बैटरी को डिस्चार्ज करके फिर जब आप डायरेक्ट्रिक स्लैब लगाते हो, then what will happen, there is another scenario, the same question. Let me explain that idea, it will be easy for you. 100 वोल्ट है, इसका कैपेसिटेंस C है, इसका चार्ज कितना है, Q नॉट इक्वल टू 100 C.
इसको हम डिस्कनेक्ट करते हैं, जो भी चार्ज है इट विल नॉट चेंज। देन यहाँ पे हम डायलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करेंगे। कुछ कुछ यहाँ पे मेरे को सेम क्वेश्चन इस तरह में भी लाइक सेम क्वेश्चन अवेलेबल इन डिफरेंट फॉर्मेट लाइक दिस। देन यहाँ पे जो भी चार्ज है चार्ज विल नॉट चेंज, द चार्ज ऑफ सिस्टम विल नॉट चेंज बिकॉज द चार्ज विल बी कंजर्व बिकॉज आइसोलेटेड। तो अब इसका चार्ज तो चेंज नहीं होगा, सो कैपेसिटेंस कितना होगा के सी नॉट। तो जो भी चार्ज है चार्ज विल रिमेन सेम नो, पहले कितना चार्ज था वही सेम चार्ज है। So then if he's asking the ratio of initial to final charge, it will be 1. This charge will not change. इसका कैपेसिटेंस चेंज हो जाता है। अगला क्वेश्चन ले लेंगे। ये तो सिंपल बेस्ड ऑन द डायोड्स। कौन सा फॉरवर्ड बायस है? सो व्हाट डू मीन बाय फॉरवर्ड बायस? इफ P is more positive than N, if P is more positive than N, then it will be forward biased. सो हमें पहले ये डायोड ले लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग आर और इज बोल रहे हैं, इसमें से कितना विच इज नॉट फॉरवर्ड बायस्ड तो भी चेक कर लेंगे। इफ एन इज मोर पॉजिटिव देन पी देन इट विल बी रिवर्स बायस्ड। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहले वाला दिस विल बी एन, दिस विल बी पी टाइप। आप यहाँ पे देख लीजिए एन इज मोर पॉजिटिव देन पी, सो दिस विल बी रिवर्स बायस्ड। नेक्स्ट दूसरा वाला अगेन एन इज मोर पॉजिटिव देन पी, so this will also be reverse biased। देन यहाँ पे देखो n का कितना है, 10 है, 10 वोल्ट है। एंड p विल बी सबका पहले p है, p टाइप n टाइप नो, n is more positive than p, so therefore what will be this one, this will be again reverse biased। यहाँ पे देख लो p is more positive than n, इसका n का कितना है, ये तो हर्थ हुआ, इसका जीरो potential, or p type is connected to plus 5 volt, so this will be forward biased। This will be your answer। These are small ideas, like जब पहले जब वो लोग क्वेश्चन एंटी वाले रिलीज करते, okay then some may be here and there, but these are some at least ideas are there। Really we should उन बच्चों को जो एग्जाम आज का एग्जाम लिख के हाँ कि हमको इतना लाइक दे आर हेल्पिंग अस, दे आर गिविंग क्वेश्चंस लाइक बाकी बच्चों को लाइक इसे लॉट ऑफ हेल्प। एटलीस्ट तुमको आइडिया हो जाएगा ना लाइक व्हाट आर द लेवल दे आर आस्किंग। अगला क्वेश्चन ले लेंगे। Now this is the from a sphere of mass m, radius or cavity of is created. Find the moment of inertia but are passing through the center of sphere and the cavity. So what is the axis? यहाँ पे axis जरूरी है। So what is the axis? Axis तो ये वाला हुआ axis. But this axis is asking to calculate the moment of inertia. Cavity किधर है? ये वाला तो cavity हुआ। हम क्या assume करेंगे? Like for a sphere of mass and radius, cavity of radius r by 2 is created. Find the moment of inertia. There's a question। यहाँ पे हम पहले स्पीयर विदाउट कैविटी, तो उसका लेके मास कैलकुलेट करेंगे। कैविटी ऑफ रेडियस r by 2 इज क्रिएटेड, तो इसका रेडियस इसका मास कितना होगा, तो इन ए स्पीयर
ऑफ मास एम एंड रेडियस आर। बाकी बचे सो कितना m/8 हुआ। सो डेंसिटी पहले डेंसिटी ले लेंगे। सो डेंसिटी इक्वल टू मास बाय 4/3 पाई आर क्यूब बाय 4/3। This is density. So mass m will be 4/3 pi r by 2 whole cube. Density will be, so this will be now 4/3 pi r cube. This will be 1 minus 1 by 8. 8m by 7 4/3 pi r cube. Okay, this was the density of the sphere. Then what is the mass of this one? M1 will be rho into 4/3 pi r cube. इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1 तो ए हुआ m, और जो कैविटी है इसका रेडियस कितना हुआ r/2, मास m2, इसका मास m2 कैलकुलेट करेंगे। ये तो नेगेटिव डेंसिटी हुआ, सो द मास m2 इज इक्वल टू माइनस रो 4/3 पाई r/2 होल क्यूब। तो इसका मास हुआ माइनस m/8। नाउ टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम, ये एक्सिस पे रोटेट हो रहा है, सो दिस शुड बी 2/5 m1 r square plus 2/5 m2 r/2 whole square। 2/5 r square तो बार आ चुका है, m1 प्लस m2/4। 2/5 r square, m1 का वैल्यू इज m, नो m2 का वैल्यू कितना है m/8 इंटू 4। सॉल्व करने पर हमें 31/8 m r स्क्वायर। कैविटी ये वाला हुआ कैविटी। So like this cavity, center of mass में बहुत सारे जगह में पूछ सकते हैं, have to be careful। अगला क्वेश्चन ले लेंगे। Find out the, you have to find out the temperature theta shown in the diagram। यहाँ पे हमें स्लैब्स इस तरह के है। ए वाला स्लैब K1, ए वाला स्लैब इसका थर्मल कंडक्टिविटी K2 है, और ए वाला इसका थर्मल कंडक्टिविटी K3। तो इस तरह का डायग्राम हम कंप्लीट कर सकते हैं। सो नाउ इसका टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। वी हैव टू फाइंड आउट द टेम्परेचर ऑफ दिस, टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन। यहाँ पे हम विल सेंड द हीट, इट विल ब्रांच आउट। जैसे बेस्ड ऑन द थर्मल रेजिस्टेंस, पहले हम एक सर्किट डाल देंगे। दिस R1 R2, ये वाला हुआ R3। यहाँ पे टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। इसका टेम्परेचर फाइंड आउट करना है हमें। तो व्हाट इज R1 का वैल्यू हुआ R1 इक्वल टू, इसका लेंथ कितना हुआ L/2, K1 वैल्यू K1 A/2। तो L/K1 वैल्यू विल बी 60A। R2 रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे इसी तरह से। तो R2 का वैल्यू विल बी, इसका भी रेजिस्टेंस L/2 K2 A/2। K2 का वैल्यू कितना 128। R3 का वैल्यू R3 का वैल्यू विल बी L/2 K3, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, तो दिस विल बी L/K3 का वैल्यू 135। 135 विल बी 270A। R1 R2 ये जो दोनों पैरेलल, इसका इफेक्टिव विल बी R रख देंगे, सम R डैश, और
A R3 zeros, or this will be 100 degree Celsius. Temperature T. So R dash का value कितना नो? R dash will be 1 by R dash equal to 120 A by L, 270 A by L. So R dash का value है L by 298. So 398. Now they are in series. यहाँ पे सेम हीट करंट फ्लो होता है. So therefore this will become 100. जो यहाँ पे हीट करंट फ्लो हो रहा है वो सेम हीट करंट HH ले लेंगे. जितना हीट करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है सेम हीट करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है. So then this will become temperature heat current equal temperature difference by resistance R dash T minus 0 by R3. तो इसका वैल्यू 100. R1 का वैल्यू 398 minus T by R3 का वैल्यू L by 278. So this will be 390 100 minus T equal to 270 T. 39,000 is equal to 270 plus 390. ओके, टी का वैल्यू कितना हुआ? 3900 बाई 270 90 160 160 560 660. Three ninety 90 plus 70 will be 160 160 plus 500 660. यहाँ से हम फिर से लगे वी कैन सिंप्लीफाई विथ 3 नो. यहाँ पे 13 and over 22. So 1300 by 22. 1300 by 22. Let me use calculator. तुम यूज नहीं कर सकते हो, मैं यूज कर सकता हूँ. Okay, 1300 by 22. Around 59. This would be your answer. What is the topic? This one, thermal conduction. अरे का टॉपिक का that is also very important. अगला क्वेश्चन ले लेंगे. And the ratio of gravitational force F1 and F2 between sphere and mass particle before cutting and after cutting. So this after cutting यहाँ पे डायग्राम है. बिफोर कटिंग का एक डायग्राम डाल देंगे. तो बिफोर कटिंग यहाँ पे पार्टिकल मिला है हमें. सो देयर इज अ रेडियस R. ये सब जो है बिना कैविटी का. बिना कैविटी नाउ व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल विल बी कॉल्ड F1. तो F1 यहाँ पे फील्ड कितना होगा? E1. So F1 will be equal to Gm by 2R whole square. Gravitational force पूछ रहे हैं. So it will be Gm square. फील्ड कितना? ओके एक काम करेंगे, पहले फील्ड कैलकुलेट करेंगे. सो दिस विल बिकम Gm by 4R square. So फोर्स कितना हुआ? M into E1. So Gm square by 4R square. बाद में जब कैविटी आता है तो कितना कैविटी हम यहाँ पे निकाल रहे हैं? R/3 मास यहाँ से निकालना है. So then we'll calculate the mass of cavity. M2 इसका तो रो 4/3 pi R/3 और को रो का वैल्यू कितना है? 4/3 pi R cube. 4/3
3 pi r cube and ये हुआ 9. इसका मास हुआ m/9. Now what is this one? Before, afterwards, we have to approximate like this. This will interact. Only now cavity will calculate the interaction between the particle and the cavity. So distance between the particle and cavity कितना होगा? 2r में r/3 निकाल देंगे. Say 2r/3. In 2r, we'll remove 2r/3. 3 2 just 6 6 4r/3. Separation between the cavity and the particle will be 4r/3. इसका मास कितना है? m2. Now this will interact with the cavity. यहाँ पे हम फील्ड कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू कैविटी. सो E2 का वैल्यू कितना होगा? नाउ gm2 बाय 4r/3 होल स्क्वायर. m2 का वैल्यू कितना है? m2 का वैल्यू विल बी m/9. नो दिस विल बी 16r²/9. so this will be gm/16r². now we'll subtract this field. The net field will be E1 minus E2. क्यों क्यों सब्ट्रैक्ट करना है? बिकॉज कैविटी का फील्ड तो like it will be in this direction, opposite direction, because negative mass density. यहाँ पे नेगेटिव मास डेंसिटी यहाँ पे लगा दो बस. नेगेटिव ई मीन्स इट शुड बी अवे. तो E1 का वैल्यू कितना है? E1 का वैल्यू विल बी gm/4r². gm/16r². तो यहाँ पे gm/4r² कॉमन कर लेंगे. 1 minus 1/4. 3 gm/16r². Net field. So what is the force of interaction? M into E. Naya force. The new force of interaction. This should be equal to 3gm²/16r². ग्रेविटेशनल फोर्स पूछ रहे हैं. इसका हम F2 करें. So F1/F2 is asking about F1/F2. तो F1 का वैल्यू कितना है? F1 का वैल्यू विल बी gm². लेट मी सिंप्लीफाई कर देता हूँ थोड़ा बहुत. तो यहाँ पे F1/F2 पूछ रहे हैं ना. F1 का वैल्यू हुआ gm²/4r². F2 का वैल्यू 3gm² 16r². 4/3. And this will be your answer. So this topic is based on the gravitation. अगला क्वेश्चन ले लेंगे. राइट अ डायमेंशनल फॉर्मूला. ये तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द यूनिट्स एंड डायमेंशंस. एंड वेरी इजी क्वेश्चन. तो आप डायरेक्टली मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द वायर, उसका फॉर्मूला अगर आपको याद रहे तो B bar इक्वल टू म्यू नॉट I बाय 2 पाई x. ये तो फॉर्मूला है. नो इसका B बाय म्यू नॉट I 2 पाई x. इसका क्या हुआ? नो इसका डायमेंशन पूछे. डायमेंशंस ऑफ दिस शुड बी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ दिस टू. 2 तो कांस्टेंट हुआ. द इंटीजर 2 विल बी कांस्टेंट, पाई विल बी कांस्टेंट. इसका कुछ डायमेंशंस नहीं रहते. सो व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ I एंड x? I का हुआ करंट एंड दिस का हुआ
length dimension. So this will be AL minus 1. Very simple. So if you know the Mank field due to the long wire, it will be easier. अगला क्वेश्चन ले लेंगे. जॉकी, दिस वन द स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे. JOCKEY. फाइंड द करंट थ्रू द बैटरी. सो बहुत सारे बोल रहे हैं कि दिस इज द आउट ऑफ सिलेबस सर, डिलीटेड. इट डजंट रिक्वायर पोटेंशियोमीटर कॉन्सेप्ट. इज कनेक्टेड एट मिड पॉइंट पूछ रहे हैं यहाँ पे. मिड पॉइंट पे कनेक्ट करे तो मिड पॉइंट कनेक्ट करें तो देन क्या हो जाता है कि लगे दिस इज सेल. इसका वायर का पोटेंशियोमीटर वायर कितना है, 1 ओम है. पोटेंशियोमीटर वर्ड नॉट यूज, बट दिस सर्क्यूट इज अ पार्ट ऑफ सिलेबस. 0.5 ओम यहाँ पे आ जाता है, बाकी 0.5 ओम. देन 2 ओम यहाँ पे. ये हुआ 0.5, 0.5 and this will be 2 ohm. EMF of cell 0.9 volt. 2 ohm and 0.5 ohm. These two effective will be 2 into 1 by 2, 2 plus 1 by 2. इसका 2 by 5. 2 by 5. 2 by 5 का वैल्यू कितना होगा, 0.4. 0.4 will be in series with this. अगला सर्क्यूट सिंप्लीफाई होने के बाद कितना आ जाएगा, 0.4 ओम और ये वाला हुआ 0.5 ओम. कुल मिला के 9. कितना टोटल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस हुआ 9, 0.9 ओम. कितना करंट फ्लो हो जाएगा, 0.9 by 0.9, 1 एम्पियर. not needed, not a potentiometer concept, huh? Just like at the midpoint of the wire, उसका रेजिस्टेंस, वायर का रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम है. So half ohm will come here. So it's just based on the series parallel. बल्कि जॉकी समथिंग पोटेंशियोमीटर वायर समथिंग कॉन्सेप्ट अगर वर्ड्स यूज किया रहे तो भी still it's a part of syllabus. Potentiometer not part of a syllabus, but still it's part of syllabus. So I'll write this is something like based on the series parallel. Current LCT. अगला क्वेश्चन ले लेंगे. The radius of the ground state radius of hydrogenate is calculate the radius of the first excited state of the helium ion. आपको तो ये फॉर्मूला अगर याद रहे तो एटॉमिक फिजिक्स, दिस प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द डायरेक्टली अगर आपको फॉर्मूला याद रहे तो ओके फाइन गुड, और एल्स यू कांट डिराइव. So we'll recollect the radius of the nth Bohr orbit in hydrogen atom. The formula will be n square z a naught. What is a naught? A naught is Bohr's orbit. For hydrogen atom का value z equal to 1 for hydrogen. Helium का कितना है? Helium का z equal to 2. Okay, fine. तो यहाँ पे लगा देंगे हम Rn. Radius of hydrogen atom, the ground state n will be 1. Hydrogen atom का कितना है? N equal to 1. Radius of first excited state, इसका हुआ helium n equal to 2. यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे हम a naught by a naught by a पूछे, calculate the radius of first excited state of helium. Ground state radius of hydrogen atom is a naught, n equal to 1. Yeah,
पहले हाइड्रोजन का फाइंड आउट करेंगे। हाइड्रोजन का n इक्वल टू 1 1 ए नॉट, ए हो गया n ए नॉट। हीलियम का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। हीलियम का फर्स्ट एक्साइटेशन मींस n इक्वल टू 2, then charge of nucleus of helium will be 2, ए नॉट। सो यहाँ पे ए नॉट हम आर एच करेंगे। सो आर एच ई विल बी 2 times of that of आर एच और 2 ए नॉट। It was asked like this in exam. This is a formula. Radius of n board orbit n square is n square a naught by z. एग्जाम में आप डिराइव नहीं कर सकते, तो वेरी लेंदी है, बल्कि आपको ये तो याद रखना पड़ता है। ये तो थोड़ा मैटर वेव्स के बारे में क्वेश्चन है। Electron in the ground state of hydrogen atom has an orbit of this much, while that of electron in the third excitation, the ratio of de Broglie wavelength. The ratio of de Broglie wavelength of electron in the ground state to that in the excited state. This is based on the de Broglie matter waves. For the revolving electron, the formula will be 2 pi r by n. Or this is one basic concept, no? N lambda equal to 2 pi r. So based on this, we'll take the formula like this. The ratio of de Broglie wavelength of electron in the ground state to that in the excited state. Means a third means n equal to 4. Huh? So lambda 1 by lambda 4 equal to 2 pi r1 by n1, 2 pi r2 power of 4 by n4. This will be n2, n4 by n1, r1 by r4. Third excitation means it will be 4. R1 का वैल्यू कितना है 5.3 इंटू 10 to power of minus 11, इसका 8.48 इंटू 10 to power of minus 10. इसको यहाँ पे रेशियो या टू सॉल्व इट. This is a formula. So I think n lambda equal to 2 pi r. De Broglie matter waves of revolving electron. So what is the formula? L is lambda equal to h by mv. यहाँ से हम डिराइव करते हैं इसको. अगला क्वेश्चन ले लेंगे. The energy radiated by sphere. एक स्फीयर है, इसका रेडियस कितना है a, of surface temperature T1 R1. इस E बोल रहे हैं. यहाँ पे एक स्फीयर हुआ, देन और एक बड़ा स्फीयर, इसका एनर्जी रेडिएशन कितना है, and the surface temperature is 400 K. Then the energy radiated by this. In terms of E, we have to express. इसका R2, इसका surface temperature 400, इसका surface temperature 800 K. रेडियस कितना है 0.2 मीटर. रेडियस इसका कितना है 0.8. सरफेस टेम्परेचर कितना हुआ 400 केल्विन. Then what is the Stephen's law? Stephen's law, power radiated should be equal to sigma E sigma surface area 4 pi r1 square T1 to the power of 4. P2 E sigma 4 pi r2 square T2 to the power of 4. इसका जो पावर है, this total energy radiated will write it. इसका E dash पूछ रहे. Now E dash by E should be equal to R2 by R1 square T2 by T1 to the power of 4. In terms of E यहाँ पे एक्सप्रेस करना है, so 0.8 by 0.2 whole square. Temperature 400 by 800 to the power of 4. यहाँ पे 4 square आ जाएगा यहाँ पे, and यहाँ पे 1 to the power of 4, 1 by 2 to the power of 4.
So A was 16 by 4. This will become 4D. ये simple formula based Stephen's law. अगर आपको फॉर्मूला याद रहे तो then fine, good, you can do better in exam. Otherwise कुछ नहीं कर सकते आप. Revising formulas, very very important. So this based on the radiation, thermal radiation. Stephen's law. अगला क्वेश्चन ले लेंगे. द फ्रिंज विड्थ. यहाँ पे वाईडीसी now in YDAC the fringe width is given by lambda capital D by mu D. Mu is what? Refractive index. The fringe width might decreases if the setup is put in a denser medium. Definitely mu किसी mu if for any medium will be greater than 1, so the fringe width will decrease. So एक काम करेंगे fringe width. Now when you immerse in medium it will become mu D. So W dash will be W by mu. Then what is the speed of light? Speed of light is given by V equal to C by mu. In free space कितना होगा speed? C. और medium में कितना होगा? Will be less than C. V dash less than V. The fringe width in YDAC decreases, setup is put in a denser medium. Correct statement. Velocity of light decreases in the denser medium, but frequency remains constant. This is correct. And this is a correct explanation. Okay, fine. Both assertion correct, reason correct. And this is a correct explanation. Reason is correct expression of assertion. Just simple theoretical concept. अगला क्वेश्चन ले लेंगे. In a vernier caliper, one vernier scale division is smaller than one main scale division. I think this is what happens. No? 10 VSD will become 9 MSD. This is what happens. The vernier constant is given by one main scale division multiplied. No, what is the vernier constant? Vernier constant or the least count. This will write it as 1 MSD minus 1 VSD. So this is wrong. This one is correct. Assertion is correct. Reason is wrong. This is a basic idea. One vernier scale is smaller than one main scale. Usually the most of the vernier calipers what we'll be having, we will design in this manner only. Take the next question. A particle is projected with a velocity v0 from point A in vertical so that the rope becomes slack at point B. Then the ratio of kinetic energy at point B and C. So what is the minimum velocity you have to project at lowest point? At lowest point you have to project which is equal to u. कितना? v0. काम करेंगे इसका v0 ले लेंगे. Let R be the slack. Let L be the length of the string. v0 should be equal to root of IGL. Then the string will become, tension will become 0 at that point and VD will become equal to root GL. Okay, so concept I think पता है सभी लोगों को. Then is asking the ratio of kinetic energy at point B and C. यहाँ पे कितना kinetic energy at B and C. इसके लिए सर्कुलर वर्क पर एनर्जी चैप्टर अगर आपको कॉन्सेप्ट रहे तो देयर बी मोर देन इनफ. स्पीड, अगर स्पीड आपको पता रहे तो देन यू कैन कैलकुलेट दिस वन. सो विल अप्लाई द काइनेटिक एनर्जी mva square equal to mgl minus l cos 60 degree plus mvb square by 2. So va square equal to 2g gl vb square.
तो वी ए स्क्वायर कितना, इसका वैल्यू विल बी 5 GL वी बी स्क्वायर। तो नो वी बी का वैल्यू कितना हुआ, √4 GL। वी बी स्क्वायर वैल्यू ही लगा देंगे। So VB square value will be 4GL। कंटीजेंट सी कैलकुलेट करेंगे, एम वी ए स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू एम जी एल प्लस एल cos 60 डिग्री एम बी सी स्क्वायर बाई 2। तो वी ए स्क्वायर 2GL एल प्लस एल बाई 2 वी सी स्क्वायर। डायरेक्टली हम सॉल्व कर रहा हूं यहाँ पे। वी ए स्क्वायर का वैल्यू पता है हमें, ये तो 5GL है, 2GL ये हुआ 3L/2 प्लस बी सी स्क्वायर। यहाँ पे 2, तो 2GL वीसी स्क्वायर। वीसी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 2GL। नाउ द रेशियो ऑफ कंटीजेंट बी एंड सी, कंटीजेंट बी देन कंटीजेंट सी। कंटीजेंट बी कितना, एम वी बी स्क्वायर बाई 2 एम वी सी स्क्वायर बाई 2। सो वी बी स्क्वायर, सो ए हुआ 4GL/2GL will be 2। Your answer will be 2। So what is the concept here? थोड़ा vertical circular motion and work for energy, दोनों मिला के ये प्रॉब्लम पूछ रहे हैं यहाँ पे। जस्ट कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। सर ये इक्वेशन आप एक कहां से डाल दें, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फ्रॉम ए टू बी देन ए टू सी। अगला क्वेश्चन लेंगे, ये वाला रे ऑप्टिक्स में पूछ रहे हैं। एक कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिवनेस 3/2। यहाँ पे थोड़ा लेंस दिखा देंगे। प्लेस्ड इन वाटर, बाकी सब जो है एवरीथिंग इज वाटर। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इनर एंड आउटर सरफेस, फाइंड द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। इसका जो पावर पूछ रहे थे, वी हैव टू कैलकुलेट द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। आई थिंक थोड़ा डेटा मैं चेक कर लेता हूँ। बच्चों वो थोड़ा लेंस वाला वो एक्सीडेंटली क्वेश्चन यहाँ पे आ गए। सो दिस इज द क्वेश्चन, मैं रीड कर लेता हूँ। गिवन ए थिन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n and each surface of radii r, one side is polished for complete reflection, at what distance from the lens and object to be placed on optic axis so that image formed on the object itself। यहाँ पे हमें लेंस है, थिन लेंस ऑप्टिक एक्सिस, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट रख रहे, वी हैव सिल्वर्ड इट। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n और दोनों का रेडिया r। तो व्हाट इज दिस सिल्वर्ड लेंस, तो ये तो कॉन्सेप्ट हुआ सिल्वर्ड लेंस। Then this is equal to lens प्लस मिरर। इसका फोकल लेंथ FLM, ए हुआ FM, इसका रेडिया है R एंड M। अगेन दिस इज इक्वल इन टू वन मिरर इटसेल्फ। इसका इक्वलेंट फोकल लेंथ वी हैव टू कैलकुलेट। इसका कितना फोकल लेंथ है, तो वी हैव केप्ट इट एट a distance 2f। अगर आप if you keep it at center of curvature then it will be same, so that image is formed on the object itself। So he is asking to get the value of f, that one at what distance, इससे distance के बारे में पूछ रहे हैं। this one, this is x बोलो, so what is x, x should be equal to 2f। how to calculate the f
1/f इक्वल टू 1/fn माइनस 2/fn। fm का वैल्यू कितना है r/2। पहले इंडिविजुअल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ए तो -r/2 and ए तो what type of lens? This lens is a equiconvex, so then directly go for 1/f equal to 1/n minus 1 1/r minus 1/r। इसका वैल्यू हुआ f इक्वल टू r/2 म्यू 2n 2n minus 1। एग्रीड। सो ये तो लेंस लेंस का फॉर्मूला हो। यहाँ पे सभी लगा देंगे 1/f। एफ एम का वैल्यू कितना है -r/2, सो ये हुआ -r/2 माइनस ऑफ दिस विल बी, इसका वैल्यू हुआ 2n minus 1/r 1/f 2/r will take outside, तो तब ये होगा 1 minus n minus 1। f का वैल्यू कितना r/2n। This will be the distance, इस distance पे। now what is x equal to? x equal to 2f बोल रहे हैं, तो हमें तो x फाइंड आउट करने हैं। so what is x equal to 2f? 2 into r/2n, r/n। in terms of this n and r हमें आंसर को एक्सप्रेस करना है based on the optics, ray optics, silver lens। अगला क्वेश्चन दे देंगे। समथिंग रफली आई एम हैविंग, ये जो क्वेश्चन मुझे इस तरह का मिला है। A line charge of length a/2 placed along the edge of the cube, find the flux through the cube। नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब कितना है? हम यहाँ एक काम करेंगे, अनदर 8 क्यूब्स यहाँ पे लगा देंगे। फाइन। so there are 4 cubes are there, so we'll assume this is a cube, flux through the cube। so we'll assume there are 4 cubes are there, slight disturbance was there। यहाँ पे चार्ज है, so the flux passing through each cube will be different, will be 1/4। ओके सर, इससे बड़ा डायग्राम मैं यहाँ पे डाल नहीं सकता हूँ, so please try to understand। ये जो चार्ज हम बोल रहे हैं ना, so this it is here, so definitely the flux through each cube will be 1/4। flux through the cube will be total charge कितना हुआ, lambda a/2 by epsilon naught o divided by 4। total flux यहाँ पे कितना है, total flux will be q by epsilon naught। flux through each cube will be how much? तो इसका वैल्यू, फ्लक्स का वैल्यू कितना है, लैम्डा a/2। ओके फाइन, सो ये हुआ लैम्डा a/8 एप्सिलॉन नॉट।
तो ऑप्शंस मेरे पास नहीं है, so I just like took the only the questions, and this will be your answer. So sir, what is the method? यहाँ पे method like यहाँ पे like we have to make this charge जो यहाँ पे charge है ना, this will make it as a center of the four cubes. Then the flux will come radially in all direction. The flux linking each cube will be 1/4 of the total flux. तो यहाँ पे हमें आंसर मिल जाएगा. Really good question. ये तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. प्रीवियस क्वेश्चन बेस्ड ऑन द गॉस लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे मैं चैप्टर का नाम भी लिख देता हूँ. सो दिस बेस्ड ऑन द गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. अगला वाला ले लेंगे. लाइट ऑफ वेवलेंथ इज एंड लिथियम, देन द इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम विच एलिमेंट. या तो हम डायरेक्टली we have to go for kmax equal to sc by lambda work function. Problem based on photoelectric effect. अगर आपको ये फॉर्मूला याद रहे तो वेरी वेरी इजी है. Then the electrons is emitted from which wavelength? So यहाँ पे directly work function. If sc by lambda, if this is greater than or equal to work function, photons will be emitted. So हमें यहाँ पे wavelength मिला है, so इसका energy find out करेंगे. What is the energy now? Energy will be sc by lambda. Now you have to substitute the values of h and c here. 12400 lambda will be Armstrong units 5250. इसका energy will be in electron volt. Similarly, E2 का sc by lambda to 1240 approximate, or else you have to substitute the value of h. अगर क्वेश्चन पेपर में h का वैल्यू c का वैल्यू इंडिकेट करे तो you have to substitute, or else you have to do this approximation. So this will be 5250. चेक कर लो, अगर E1 ग्रेटर देन वर्क फंक्शन रहे तो ये जो एनर्जी है ना, ये तो सेम हुआ ना. ओके, नो अगर ये जो एनर्जी है, if this is greater than work function, then it will come out. If it is less than work function, it will not come out. Means the energy of the photon, if it is greater than the work function, then photons will be ejected, photoelectrons will be ejected. Less than work function will not be ejected. तो हमें क्या करना है कि you have to find out the value of E, and this value you have to compare is greater than this or this. तो मेरे पास like a calculation. I'll roughly calculator. कैलकुलेटर से मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ. एनर्जी इसका एनर्जी हुआ 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब हम चेक कर लेंगे. Then this will give out energy. This from here photoelectrons will come. From here no photoelectrons. Then the electrons emitted from which element? From the CCM. Because the E is greater than work function 1, E is less than work function 2. A over 2, this will be 1. I think just you should be very good in this calculation. Huh? ये थोड़ा क्वेश्चन. पहले इक्वली अपोजिट चार्ज मेटल प्लेट्स. यहाँ पे हमें दो चार्ज प्लेट्स हैं. इसका लेंथ ऑफ ईच प्लेट कितना है? 10 सेंटीमीटर. ये चार्ज हुआ प्लस क्यू माइनस क्यू. The electron emerges of the electric field region with a horizontal component of velocity, the magnitude of electric field between the plates is. Then the vertical component of velocity of electron. यहाँ पे vertical component of electric field है. Then the vertical component, the charge velocity of electron है. यहाँ से हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को. Then the trajectory will be like this. जब यहाँ पे बाहर निकल रहा है, so it will have the components like this. इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना दिया? 10⁶ मीटर पर सेकेंड. इसका वर्टिकल कंपोनेंट पूछ रहे.
हमें ये लेंथ पता है. What is the time it will take to travel this distance? Vx equal to L by T, 10 to the power of 6, 0.1 T. T is equal to 0.1 microsecond. Okay, fine. और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी पता है. देन कितना एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस? Ay equal to QE by m. Charge of electron 1.6 into 10 to the power of minus 19. Mass of electron 10 to the power of minus 31. Electric field value 9.1 per centimeter. यहाँ पे हम 100 सेंटीमीटर. दिस विल बी 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर चुके. दिस विल बी 100. दिस विल बी एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन हम पता है. सो नाउ ay into t. Some like it is projected from one plate so that it will emerge from the other plate. Ay, so a सब value हमें substitute करना है. 1.6 into 10 to the power of minus 19. 9.1 into 10 to the power of minus 31. 9.1 into 10 to the power of 2. Or a time also. क्वेश्चन थोड़ा you have to read. अगर तुमको समझ में आए तो दिस विल बी वेरी इजी. 0.1 इंटू. ओके, सो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे. 9.1 तो कैंसिल हो जाएगा. 1.6 तो 0.16 यहाँ पे बचेगा आपको. तो बाकी सभी यहाँ पे ले लो तुम. 1.6 बचा. 9.1 ये कैंसिल हो जाएगा. 10 टू पावर ऑफ 31. सो यहाँ पे 33 और 25. सो 16 इंटू 33 और 25. 10 टू पावर ऑफ 8. इसका y component of velocity. Based on the capacitor and electrostatics. ये तो simple thermal resistance. Which of the following graph represent various resistivity with the temperature? I think there's a theoretical question. Thermal effective resistance, thermal temperature coefficient of resistance, concept based on temperature coefficient of resistance. As we increase the temperature, the resistivity will increase. Temperature quotient of resistance. Directly, it's the theoretical one. But as you increase the temperature, the resistance will increase. The resistivity also will increase. ये वाला तो find out the equivalent capacitance for the given situation. थोड़ा diagram. This is a plate. ये दो plate है यहाँ पे. And ये वाला एक, this one dielectric slab. इसका K1 है. ये वाला एक dielectric slab K2 and K3. And this one is K3. No. इसका effective capacitance we have to find out. Then ये जो breakup करेंगे, so this will be K1, K2, K1, K2, K3. Separation over D. Area of cross section A by 2. Area of cross section A by 2. D by 2. D by 2.
ये दोनों कैपेसिटर्स हो गया, ये तो सीरीज है, इसका इफेक्टिव इसमें पैरेलल हो गया. सो वी हैव टू कैलकुलेट द इफेक्टिव कैपेसिटेंस. So the effective capacitance will be, इसका हम नाम दे देंगे C1, C2, C3. तो C3 प्लस C1, C2 बाय C1 प्लस C2. C3 का वैल्यू कितना है? K3 एप्सिलॉन नॉट A by 2 by D. C1 का वैल्यू K1 एप्सिलॉन नॉट A by 2 D by 2. K2 एप्सिलॉन नॉट A by 2 D by 2. बाद में इसका डिनोमिनेटर विल ऐड देम. प्रॉब्लम वेरी सिंपल, बट आपको सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा. इट्स रियली वेरी लेंदी. बिकॉज यू हैव टू मैच द ऑप्शंस. नो, until आप सिंप्लीफाई नहीं करेंगे तो यू कांट, वी डोंट एंड अप आंसर. सो यहाँ पे तो a by 2 d by 2 विल गेट कैंसल आउट. सो एप्सिलॉन नॉट a by d, ये टोटल आप विल टेक इट द कॉमन f नॉट a by d. देन यहाँ पे हमें बचा है k3 by 2 k1 k2 by k1 plus k2. This will be your answer. क्या हमें करीब करीब मेरे को 23 क्वेश्चंस मिले. तो ऑलमोस्ट 23 क्वेश्चंस जो भी मेरे पास था मैं कलेक्ट करके आई एक्सप्लेन्ड इट. द पेपर वेरी ऑनेस्टली अगर बोलो तो इट्स रियली टफ. सो व्हाट अबाउट अदर सेशंस? Other sections definitely, you have to be alert. Not they are formula based only, but you have to do simplification. It's like maths, no. So you should know the concept, you know formula, and you have to simplify to get the answer. It's not like something very only just mere some formula. The paper is considered as difficult, not something like a moderately difficult. No, it's really difficult. Difficult is not conceptually difficult. It's like a lengthy also, you can say it. So my conclusion is paper is, what is the conclusion for physics paper? यहाँ पे conclude कर देता हूँ. Because like see my conclusion, like आप भी देख लो ना, like कितना सारा calculations. What about the paper? Paper is difficult, conceptual, formula based, with lengthy calculations. Not like something conceptually difficult. Because of you should know the formula and आपको calculations भी करना पड़ता है. Okay, fine. So anything if you score something 80, the score between 80 to 85, it will get you 100% marks. This will be percentile. So for 100 percentile, I'll clearly write it. For 100 percentile, 80 to 85 marks. Okay, fine. We'll discuss the evening shift paper. Just I got it and sort it out. I'll update it. Okay, kids. All the best for all those who are writing tomorrow exam. All the best. So once again, revise formulas all. So डरने का बात कुछ भी नहीं है. Like जो भी अगर आपको concept clarity formula याद रहे तो you can manage this mains exam very clearly. Okay, bye. See you all of you. Take care. Yeah. Good evening, kids. We are going to discuss the 22nd January shift to evening shift. 22nd January evening shift. Paper, it's like a, you can say like a easy paper. यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा अगर आपको अच्छा स्कोर आना है बोले तो. देन करीब करीब आपको तो 99% के परसेंटाइल के लिए इन फिजिक्स में. सो इफ यू कैन, यू हैव टू
get around 60-65 marks, that'll be sufficient. And paper is relatively very easy compared to the shift one. So we'll यहाँ पे हम पेपर डिस्कस करेंगे. So बहुत सारे आपको मेथोलॉजी भी मिलेगा, लेकिन बाकी शिफ्ट को आप क्या करना है. Okay, good evening बच्चों. We are going to discuss the JEE Mains 2025 22nd January evening shift वाला पेपर. मैं आपका श्रीधर सर फिजिक्स. Paper you can say it's a, what about the paper level of paper, you can call it as easier. It'll come under easy section में आ जाएगा. And almost all topics यहाँ पे cover हो चुका है. Compared to January shift 1, A shift 1, this paper is easy. यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत सारे problems solve करना पड़ेगा आपको, आप like if you want a better rank. So we'll discuss the paper. We'll get some, as usual, I'll share other ideas also. Now, first one question is asking the work done by the force. The displacement of particle moving under action of force. Find the value of B if the work done by the force is 0. So this particular chapter, name of the chapter, topic का chapter name है work done. Work, energy, power concept के बारे में है. And work done equal to basic formula. Formula क्या है? Work done equal to F bar dot D bar. So 2I cap plus BJ cap plus K cap dot I cap, J cap, K cap. And net work done 0. यहाँ पे हमें information क्या मिला है कि like net work done will be 0. The net work done, telling it's a 0. हम वर्क डन यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. नो इट इज अ डॉट प्रोडक्ट. I dot I तो वो 1. I dot I will be 1. So then applying this 2 plus B बाद में J dot like I dot I 1. So 2I cap dot I cap will be 2. Then बाद में I dot J 0, I dot K will be 0. Then J dot I will be 0. J dot J will be 1. So यहाँ पे हमें B मिलेगा. J dot K will be 0. J dot K will be 0. Then K dot I 0. K dot J will be 0. अब बच्चे क्या हुआ लगे K dot K ये तो हुआ 1. तो B का वैल्यू कितना हुआ नो लगे 0 इक्वल टू 3 प्लस B, B इक्वल टू -3. ये तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड पूछ चुके हैं. द नेम ऑफ द चैप्टर इज वर्क पावर एनर्जी. अगला क्वेश्चन ले लेंगे. सिंपल लगे आपको ये याद रखना पड़ेगा. वर्क डन इक्वल टू F bar dot D bar. एंड डॉट प्रोडक्ट का थोड़ा बहुत आपको वेक्टर अलजेब्रा मैथ्स में भी पता है, सो यूज करो. सो द ट्राई टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट, देन यू कैन मैनेज दिस. अगला वाला क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द एसी सर्किट्स अल्टरनेटिंग करंट. यहाँ पे मैं चैप्टर का नाम भी लिख दूंगा, इट बी इजी फॉर यू. जो जिसका शिफ्ट कल है, सो इट बी इजी फॉर यू. लाइक कौन से लगे चैप्टर से क्या क्या पूछ रहे, क्या क्या बचा है और क्या क्या पूछ सकते हैं, इट बी आपको एसएलसेट में इजी हो जाएगा. इन सीरीज एलसीआर सर्क्यूट, let me read question. In series LCR, the maximum amplitude of current is I naught when resistance is R. So circuit इस तरह का होता है. A resistance, this inductance, a capacitance, a AC source हुआ. जब रेजिस्टेंस R है, then at resonance करंट कितना फ्लो हो रहा है? I naught. यहाँ पे हम VRMS अप्लाई कर चुके हैं. If the resistor is replaced by, so we will इसको हम रिप्लेस करेंगे. अगर इसको हम R/2 रिप्लेस करेंगे, इसमें करंट कितना होगा? अब आपको तो यहाँ पे एट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ करंट इज आई नो. व्हाट मीन बाय जो लाइक मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एट रेजोनेंस में पूछ रहा है. एट रेजोनेंस ओनली हम एक जो सवाल है at resonance current depends on what factor? Only on the R. So therefore I naught equal to यहाँ पे हम VRMS by R रखेंगे. Again at resonance
I equal to VRMS by R/2. तो इसका कितना हुआ 2 VRMS by R. So 2I0. This will be our current. चैप्टर का नाम अल्टरनेटिंग करंट है. ओके फाइन. अल्टरनेटिंग करंट यहाँ पे कुछ फॉर्मूलास है, आपको याद रखना पड़ेगा. 6-7 फॉर्मूलास हैं. अगर वो सभी, एंड सीरीज रेजोनेंस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. एक बार रिवाइज कर लो. बाकी बाकी जो भी बचे हुए शिफ्ट को, जो भी बच्चे अभी प्रिपेयर कर रहे, सब प्लीज रिवाइज अल्टरनेटिंग करंट ऑन ऑल द टाइम. वन क्वेश्चन इज कमिंग. अगला क्वेश्चन ले लेंगे. दिस द टॉपिक बिलोंग्स टू द वेव ऑप्टिक्स and interference or YDSC, very popular. So question क्या पे यहाँ पे है, like a fringe width of red light is more than the fringe width of violet light. Fringe width is directly proportional to wavelength of light used. So यहाँ पे हम what is the fringe width का formula? Lambda d by small d. This is the basic formula है YDSC का fringe width. So what is YDSC? यहाँ पे S1 S2 slits, यहाँ पे light is incident of wavelength lambda. सर व्हाट इज अ स्मॉल डी? जो मैं स्मॉल डी लिख रहा हूँ, सो दिस इज द स्मॉल डी. ए हुआ, दिस इज कैपिटल डी. ए वाला हुआ दिस लाइन स्क्रीन, एंड दीज आर कॉल्ड एज ए स्लिट्स. देन जो फ्रिंज विद द पैटर्न यहाँ पे हमें आता है. सो थोड़ा थिन कर लेता हूँ यहाँ पे लेके. दीज आर द फ्रिंजेस. व्हाट इज द वन फ्रिंज विथ? फ्रिंज विथ बोले तो one dark and one bright band. This is called like a fringe width. Fringe width, it depends on this quantity. Wavelength of incident light, ये जो light incident हो रहा है slit के ऊपर. And it also depends upon the distance d and the separation between the slit and the screen, and also distance between the slits. इसको ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा. दिस वेरी इंपॉर्टेंट. YDSC में भी कुछ फॉर्मूलास है, याद रख लो. इट बी वेरी इजी. व्हाट अबाउट द वेवलेंथ? वेवलेंथ तो ये जो फॉर्मूला आपको याद रहेगा, बिबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. इन इस फॉर्मूला से हम लाइक वी कैन ट्रेस द वेवलेंथ. एंड बिबग्योर ऐसे लिख दो. अगर आपको थोड़ा कंफ्यूज रहे तो टेक हेल्प ऑफ दिस बिबग्योर मेथड. लैम्डा वी लेस देन लैम्डा आई लेस देन लैम्डा बी लैम्डा जी लैम्डा वाई लैम्डा ओ लैम्डा आर. Fringe width of red light. So what is the information यहाँ पे? Wavelength of red and violet. Red का wavelength है, violet है. So fringe width of violet equal to lambda v by capital D. Fringe width of red is equal to lambda r by capital D by D. तो जिसका wavelength ज्यादा है, then and what is the information? Lambda v less than lambda r. इसे हम क्या like what is the conclusion we can make it is WV will be less than WR, or fringe width of red will be more than that of violet. Okay, this is a correct statement. Fringe width is directly proportional to wavelength of light used. W will be directly proportional to lambda. Both statement 1 and 2 are correct. Statement 1 and statement 2. आया था यहाँ पे तो statement okay, option B ले लेंगे. This is our correct statement. Paper manageable. It's very like only somehow if you remember all the basic concepts and formulas, it'll be easier. बाकी आपको like बच्चे जो अभी शिफ्ट अगला शिफ्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं, so one very simple. You have time.
जस्ट जाके पढ़ लो, नथिंग इज देयर, लाइक जितना होता है उतना कॉन्सेप्ट पढ़ लो, पढ़ के थोड़ा फॉर्मूला से याद रख लो, यू कैन मैनेज। डोंट मिस दिस जेई मेंस। जितना होता है शिफ्ट 1, लाइक जेई मेंस जनवरी का प्रिपेयर करो, देन यू हैव द फेब्रवरी मार्च, ये 2 महीने में लाइक रिवाइज एज मेनी एज टाइम्स पॉसिबल, सब याद रह जाएंगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रहे तो देन ऑटोमेटिक फॉर्मूलाज भी आपको समझ में आ जाएगा। देन ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस को यू कैन डू वेरी इजीली। देयर नो नीड टू इवन वॉच माय यूट्यूब चैनल ऑल्सो। जस्ट आपका टीचर नोट्स जो भी आप जब पढ़ चुके उसको ओपन करो, स्टार्ट रीडिंग, इट्स वेरी इजी। प्लीज डू लिसन। इट्स लाइक ए यू कैन सेव योर जे मीन्स। आपको ये बहुत लाइक ए वेरी यूजफुल लाइक ए टाइम इज देयर, प्लीज यूटिलाइज इट। नेक्स्ट, यहाँ पे हमें 2 वायर है, करंट 5 एम्पियर, इसमें करंट 4 एम्पियर फ्लो हो रहा है। तो इसको हम वायर 1, इसको वायर 2 दे देंगे। यहाँ पे you have to calculate the net field, magnetic field at point 2. Due to wire 1, यहाँ पे field will be into the plane B1. Due to wire 2, it will be out of the plane. Then what is the magnetic field due to long wire? The net field at O will be B1 minus B2. Magnitude ही पूछ रहे हैं, so this will be mu naught current I1, इसको हम I1 करेंगे, A वाला I2 will be 2 pi, कितना हुआ ये तो 10 सेंटीमीटर, minus mu naught I2, 2 pi, A was 4 सेंटीमीटर। म्यू नॉट का वैल्यू कितना है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, करेंट 5 एम्पियर, 2 पाई 10 सेंटीमीटर मीन 0.1, म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, करेंट 4, 2 पाई 0.04। यहाँ पे पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई विल गेट कैंसिल आउट, 4 पाई 2 भी कैंसिल हो जाएगा, सो 2 इंटू 10⁻⁻7 will take outside। बाकी यहाँ पे 50 माइनस 100, 100 into 10⁻⁻7, so 10⁻⁻5 टेस्ला, ये वाला हमारा आंसर है। ओके, सो दिस इज द क्वाइट सिंपल फॉर्मूला है ना। आपको आपको अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो यू कांट डू एनीथिंग इन एग्जाम। म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। ओके सर, चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। यहाँ पे फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, दिस वन, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर, बी बार ड्यू टू लॉन्ग वायर कॉन्सेप्ट। ये तो लॉन्ग वायर हुआ, टू इनफाइनाइट बोल चुके हैं ना, सो देन दिस द फॉर्मूला यू हैव टू अप्लाई। ओके दिस, सो आपको ये जो फॉर्मूलास याद रखना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द रिंग, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग शीट। ये बाकी जो शिफ्ट लिख रहे हैं, अगले शिफ्ट लिख रहे हैं, प्लीज रिवाइज ऑल दिस फॉर्मूलास। स्टेटमेंट 1, यहाँ पे पेंडुलम इज टेकन फ्रॉम अर्थ to another planet having mass 4 times and radius double that, the time period of pendulum is। यहाँ पे हम pendulum is taken, planet having mass 4 times, g का value it depends upon g(m)r square। तो इसका मास कितना है, 4 times that of earth and radius double that of earth। तो इसका कितना हुआ, g(m)e)r square। The time period of pendulum remains same as on earth। और ए प्लैनेट में
सो अर्थ का ऑन अर्थ व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? ये तो हुआ GMERE²। देन व्हाट इज ये दोनों देख लो आप लोग, दोनों इक्वल है ना। GP equal to G. The acceleration due to gravity on planet is equal to that on the earth. The time period of pendulum only depends on the gravity of the planet. नहीं, आपको पता है like a time period. What is the expression for time period? It depends upon L and G. तो यहाँ पे statement 1 correct है, statement 2 is false. Statement 1 is true, statement 2 is false. It depends upon time period of pendulum, depends upon the length and also acceleration due to gravity. So what is the question? This is the SHM, simple harmonic motion. सब टॉपिक का नाम सिंपल पेंडुलम। A force F bar acts on, find the torque। ये तो रिजिड बॉडी मैकेनिक्स, और इसको हम रोटेशनल डायनामिक्स, सब टॉपिक इज टॉर्क। टॉर्क के बारे में पूछ रहे हैं, टॉर्क। ये जो कीवर्ड्स है, टॉर्क, मोमेंटम, फाइंड द वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इससे आपको यू शुड ट्रेस आउट द नेम ऑफ चैप्टर है, और वो चैप्टर से सब टॉपिक से व्हाट आर द फॉर्मूलास। बेसिकली टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। रोटेशन मैकेनिक्स में बेसिक स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम। इससे ज्यादा बड़े बड़े क्वेश्चंस तो नहीं पूछते ना, जो भी पूछते हैं स्मॉल फॉर्मूला बेस्टिंग। सो टॉर्क इक्वल टू आर बार क्रॉस एफ। सो या तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट जरा अगर पता है तो लिटिल बिट इजियर। 2i कैप minus 3j cap 7k cap क्रॉस I cap 2j cap minus 3k cap। इसका सिंप्लीफिकेशन I j k 2 minus 3 7 1 2 minus 3। टॉर्क इज अ वेक्टर, यहाँ पे हम कर लेंगे I cap A1 9 9 minus 14 minus j cap minus 6 minus 7 plus k cap 4 minus of minus 3। 9 minus 14, so minus 5 I cap plus 13 j cap plus 7 k cap। तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन 3, दिस इज टॉर्क। आपको ये मैट्रिसेस एक्सपेंशन मैथ्स में भी पढ़ चुके होंगे, वेक्टर अलजेब्रा, सो टेक हेल्प ऑफ देम। टॉर्क दिस इज अ फॉर्मूला, ये बेसिक फॉर्मूला आपको याद रहना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, वेरी वेरी एसेंशियल। बिना ये फॉर्मूले आप यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते, इसको फॉर्मूला जरूर याद रखना। देन is the problem based on the kinetic theory of gases। CV मोलर स्पेसिफिकेटेड कांस्टेंट वॉल्यूम, इसका फॉर्मूला कितना है? FR/2 फॉर नॉन वाइब्रेटिंग डायटमिक, नॉन वाइब्रेटिंग डायटमिक गैस के लिए CV इक्वल टू FR/2। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना? 5। सो CP इक्वल टू CV प्लस R, तो इसका वैल्यू हुआ 5R/2 प्लस R 7R/2। देन गामा CP/CV बोलते हैं हम, तो गामा 1 इक्वल टू 9, it was 7R/2 by 5R/2।
7/5. For वाइब्रेटिंग डायटोमिक गैस के लिए CV का वैल्यू विल बी 7. डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना? Okay, for non-vibrating, degree of freedom will be 5. For vibrating, इसका degree of freedom will be 7. So CP का वैल्यू कितना हुआ? 7R/2 plus R will be 9R/2. इसका gamma 2 will be 9R/2 by 7R/2. 9/7. 9/7. इसका करेक्ट. Okay, this one gamma 7/5 will be greater, so gamma 1 will be greater than gamma 2. Vibrational, due to vibrations, extra 2 degree of freedom. Due to non-vibration, only diatomic. Diatomic will be due to 3 translational, 2 rotational, and 2 will be due to vibrations. Okay, fine. So यहाँ पे due to translational 3, due to rotational 2, due to vibration 2. अगर non-vibration means only 5. Due to vibration, total degree of freedom यहाँ पे 7 लेना है हमें. So that's what I did. यहाँ पे non-vibration के लिए 5 degree of freedom. Due to vibration extra 2 add करना है. So कुल मिला के वो 7 हो जाएगा. 7 degree of freedom. So this topic very important, KTG. Thermodynamics, KTG, and radiation. These are the thermal conduction, maximum possibility of asking, and calorimetry. Simple formulas. एक बार फिर से रिवाइज कर लो. Now this is about the logic gate. Logic gates. Semiconductor physics. The problem is based on semiconductor physics. थोड़ा यार technical. Just wait. The topic is based on the logic gates, semiconductor physics. Topic, subtopic, logic gates. यहाँ पे हमें बहुत सारे गेट्स दिख रहे हैं. सो ए वाला हुआ एंड गेट, ए वाला हुआ एंड गेट, एंड दिस विल बी नॉट गेट. तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द लॉजिक सर्किट ऑफ टू गिवन, आइडेंटिफाई द गेट जी. गिवन आइडेंटिफाई, यहाँ पे हमें ट्रूथ टेबल मिला है. ये जो गेट है, दिस इज अननोन थिंग. इस गेट बारे में हम पता नहीं. सो जो भी गेट है, इट शुड सेटिस्फाई दिस ट्रूथ टेबल. यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे लाइक 0. अगर 0 आप दे देंगे यहाँ पे, ए हुआ 1, 1 and 0, this will be 0 because AND gate है ना. Then यहाँ पे 0 हुआ 0, 0, this will become 1. So यहाँ पे भी 0, 0 and 0 अगर यहाँ पे है तो then this will be 0 and 0. यहाँ पे 1 हो रहा है, 0 and 0. This is becoming 1. Then it should be NAND gate. NAND gate will be of this kind, 0, 0. Output will be 1. और एक इनपुट से चेक कर लेंगे, 1 1 भी है तो और एक इनपुट से चेक कर लेंगे. अगर ए 1 हुआ तो दिस विल बिकम 0. अगर ए 1 हुआ, यहाँ पे 1 1 ले लेंगे, ए हुआ 0, 1 and 0 again will be 0, 1 and 0 will be 0, 0 0 अगर आए तो अगेन यहाँ पे 1 है. So I think it will satisfy the NAND gate.
दो इनपुट और कौन सा, तो एक इनपुट चेक कर लो। इसको वन, इसको यहाँ पे वन, इसको जीरो बना देंगे, देन यू कैन वेरीफाई। सो इट्स डेफिनेटली ए नैन गेट। ये जो गेट है इट विल बी नैन गेट। ओके, लाइक आई राइट डाउन वन मोर इनपुट है ना, वन 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 यहाँ पे लगा है, तो इट विल बिकम जीरो। जीरो यहाँ पे ले रहे हो बोले तो ये वाला हुआ वन, वन वन, ये हुआ वन, वन एंड जीरो हम ले चुके हैं, वन एंड जीरो। वन एंड जीरो, ये हुआ जीरो, जीरो एंड वन, जीरो एंड वन again will be zero. So ये तो NAND gate. Very good question. Simple logic gates. Huh? Everyone should have done. Okay. दूसरा next question लेंगे. This question is based on the EM waves. डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में पूछ रहे हैं. What is the displacement current formula? Epsilon naught d phi, rate of change of flux. Flux. What is the electric flux? E into area. So यहाँ पे now this will become epsilon naught a dE by dt. So यहाँ पे ले लो that epsilon naught is constant and dE by dt will be constant. The electric field between the plates will remain constant. प्लेट का एरिया इतना है, इस एरिया में कितना डिस्प्लेसमेंट करंट पूछ रहे हैं. द क्वेश्चन इज लाइक दिस. If this circular area, the question actually the diagram इस तरह है. इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना ए है. यहाँ पे हमें एक रीजन दे चुके हैं. इस सर्कुलर रीजन में डिस्प्लेसमेंट करंट कितना फ्लो हो रहा है. सो एंड वी नो फ्रॉम द कैपेसिटर कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट ही रहेगा हर जगह. तो यहाँ पे कितना डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो हो रहा है, आईडी. यहाँ पे कितना पूछ रहे हैं. उस सर्कुलर रीजन येलो कलर सर्कुलर स्ट्रिप में कितना डिस्प्लेसमेंट करंट. एंड डिस्प्लेसमेंट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया. बाकी सब भी कांस्टेंट रहेगा. ई एफ नॉट कांस्टेंट. सो आई डी बाई ए शुड बी इक्वल टू आई डी बाई ए डैश. इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, ए डैश. यहाँ पे कितना डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे कितना डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो हो रहा है, आई डी. यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना फ्लो हो रहा है, कैपिटल आई डी. यूजिंग दिस फॉर्मूला id is equal to id by a dash by a. Displacement current 6, a dash 3.2 by 16, 1.2 एम्पियर. थोड़ा बहुत अगर आपको ये फॉर्मूला याद रहे तो देन ओके फाइन, अदरवाइज कुछ नहीं कर सकते. डिस्प्लेसमेंट करंट ईएम वेव्स, थोड़ा बहुत फॉर्मूलास है, तीन चार फॉर्मूलास है. Like energy density, energy of a like energy density of EM wave in terms of the ERMS, BRMS, then energy in a certain region, then the speed of EM wave, then EM wave propagating in different medium, then displacement current. I think कुल मिला के 5 फॉर्मूलास हैं. अगर तुम कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, फॉर्मूला से एक बार रिवाइज कर लो नेक्स्ट कौन सा भी सेशन में, यू कैन मैनेज दिस वेरी इजीली. This question based on the wave optics. Wave optics, interference in thin films.
This is the topic based on the interference in thin films. This is the light incident. This is the incident light. पहले this is a glass slab. ये वाला this is the glass slab. ग्लास स्लैब है, इसके ऊपर थिन कोटिंग कर चुके हैं, फिल्म कोटिंग. देन ए लाइट इज इंसिडेंट. देन ये जो लाइट है ना, इट शुड पास थ्रू इट, so that maximum green light of wavelength will pass through it, and okay, it will get some less reflection will be there. Then इसके लिए what should be the thickness? Then what is the condition for like a maximum for the light to pass through it? 2 mu t is equal to n lambda, or thickness equal to n lambda by 2 mu. Minimum thickness पूछ रहे, so minimum thickness means n should be equal to 1, so lambda by 2 mu. Lambda value 5000, 10 to the power of minus 10. 2 mu will be into 2. So this will be 5 by 4 into 10 to the power of minus 7, 1.25 into 10 to the power of minus 7, or 0.125 micrometer. Interference in thin films, very simple concept is there. अगर आपको concept याद रहे तो, for transmitting there's a condition of 2 mu t equal to n lambda for constructive interference. For transmitted light there's a formula. Interference in thin films, no? For interference due to reflected light and also transmitted light is there. So जो formulas आपको याद रखना पड़ेगा. Then in the RC circuit should find I का current. यहाँ पे इस current को हम find out करना. यहाँ पे एक capacitor है. This is very important. Then what is at steady state we have to find out T equal to infinity. So concept belongs to RC circuit at T equal to infinity concept. Then जहाँ पे भी capacitor है, it will be open circuit. So current will only take path like this. Current का path, current कौन से branches में flow होता है? In these branches में flow होता है. जो green color में दे रहा हूँ, इसी branch में current flow होता है. सर यहाँ पे current क्यों नहीं flow होता है? So the of course यहाँ पे current आता है. It cannot branch. Okay, fine. It's not possible. और या तो this will be open circuit, और open circuit resistor not possible. Okay, fine. So हम जो मैं ग्रीन कलर का पाथ दिखा रहा हूँ उसी पाथ में करंट फ्लो होता है. देन ये जो दो रेजिस्टर्स हैं इसको करंट डिवाइड करेंगे हम. करंट डिवीजन में लेके करंट I1, I2, यहाँ पे I3, I4, सेम करंट I4 flows. So I4 क्या हुआ नो? This will be in series. These two are series, that effective is in parallel. So इसका अगला सर्क्यूट सॉल्व करने पर इस तरह मिलेगा हमें. ये जो 0.123 तो ये क्या हुआ 123. सो ये दोनों रेजिस्टर सीरीज है, सो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हुआ 2R. ये हुआ R, ये हुआ R, दिस इज R, दिस इज R एंड दिस इज V. R एंड 2R अगेन दे आर पैरेलल. हम सर्क्यूट यहाँ तक सिंप्लीफाई कर चुके हैं हम 1, 3, 4. अब ये दोनों पैरेलल है, इसका इफेक्टिव फाइंड आउट करेंगे. This will be 2R by 3. 1, 3, 4, 5.
2r/3 ए दोनों अब सीरीज में है। इसका इफेक्टिव रिप्लेसमेंट विल बी 5r/3। बाकी बचे पॉइंट्स कितना है, 4 3। नाउ नाउ ए दो रेजिस्टर से यहाँ पे करंट ब्रांच हो रहा है, तो ये दो रेजिस्टर सब पैरेलल में है। इसका हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस आर, दिस इज बी, इसका वैल्यू कितना हुआ, 5r/8। तो अब ये दोनों रेजिस्टर्स सीरीज में, इसका इफेक्टिव रिप्लेस करेंगे। तो इसका इफेक्टिव हुआ 13r/8। तो करंट का वैल्यू कितना हुआ, v/13r/8, 8v/13r। ये वाला ऑप्शन। तो सर कैपेसिटर को क्या करें हम, इट विल बी ओपन सर्क्यूट, बिकॉज एट स्टेडी स्टेट कैपेसिटर है, इट विल बी ओपन सर्क्यूट। यहाँ पे करंट फ्लो नहीं हो रहा है, यहाँ पे करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इस ब्रांच में नो करंट। तो आप एक कंप्लीट सर्किट यहाँ से निकाल दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे। दिस इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हाँ नो, यहाँ पे थोड़ा ग्राफ पूछ रहे हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट ग्राफ बिटवीन इंड्यूस्ड ईएमएफ वर्सेस टाइम। फील्ड there's a field, ये सब मैग्नेटिक फील्ड है। ये जो सब है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। एंड यहाँ पे रिंग एंटर हो रहा है एंड इट विल कम आउट। देन अगर आपको हम यहाँ पे फ्लक्स के बारे में इक्वेशन दे देंगे, देन वी कैन इजिली ब्रिंग द इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो एक काम करेंगे, लेके दिस इज द फील्ड, दिस पर्टिकुलर थिंग। एक काम करेंगे, लेके स्मॉल डायग्राम ले लेता हूँ। जैसे डायग्राम यहाँ पे हम विल ड्रॉ द रिंग। लिटिल बिट गुड क्वेश्चन। फ्लक्स लिंकिंग, यहाँ पे एवरीथिंग इज मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे हम स्मॉल स्ट्रिप ले लेंगे। पहले फ्लक्स लिंकिंग इन दिस ए और वाई, this distance will be r। ये तो मूविंग विथ a constant velocity है। देन एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप, इसका स्ट्रिप का एरिया फाइंड आउट करेंगे। दिस वन विल बी द रेजिस्टेंस, ये तो रेजिस्टेंस r हुआ, एंड दिस विल बी हाउ मच, r-x डिस्टेंस, बिकॉज ए हम ले रहे x नो। देन व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ग्रीन कलर स्ट्रिप, दिस विल बिकम dA इज इक्वल टू y इंटू dx। y यहाँ पे हम ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस r-x होल स्क्वायर।
And what is V? V over dx by dt. Fine. So हमें तो यहाँ से लेके we should get some mathematical equation. It's very simple concept. ये तो ऐसे equations तो नहीं आएंगे ना. हमें पता है. This is ruled out. A वाला possible है sin. This is also not possible. बाकी बचे so now 193 में हम statistics analysis करेंगे. V equal to dx by dt. हमें क्या like y equal to यहाँ पे y should be replaced in terms of dx. So this will become equal to r square plus r minus x whole square into dx. This is dA. a r square cancel हो जाएगा expansion में. X square minus 2rx into dx. Then flux linking d phi equal to b into dA. Magnetic field uniform है. Then x square minus 2rx into dx. This will differentiate d phi by dt. With respect to x, we have to differentiate. This will become थोड़ा a lengthy calculation होगा. We'll go for the effective length one. यहाँ से हम effective length concept use करेंगे. Effective length reduce. So effective length concept अगर आप apply करेंगे तो EMF equal to dV to y. यहाँ से हम effective length. complete ring का effective length concept use करेंगे. Then this will become BV to y will be y का value हुआ. So a value substitute करेंगे. So this will become y का value will be x square minus 2rx. I think this will 2bv x square minus 2rx. और इसको हम differentiate करेंगे, we'll get same thing. I just giving a simpler method. यहाँ पे भी 2y है. The concept is same. And b ये हुआ EMF. This will represent equation of ellipse. अगर आप थोड़ा बहुत common sense ले लेंगे तो so what is actually happens to the field? जैसे जैसे लूप एंटर होता है इसका एरिया लिंकिंग will increase, will become maximum. जब its diameter is crossing this maximum, then again the area decreases. So what will happen to rate of change of flux? First it will increase, become maximum, then decreases. Then when loop is fully inside, flux remains constant. This is okay. हर एक ग्राफ में this gap is there. हर एक ग्राफ में gap तो है. So with this we can't identify. No, we can take help of this one. As the ring enters, you can see the area. Again it starts leaving. So therefore this is not possible to be maximum. Only these two are possible. Then this will represent some to pick up this one. It's a bit tough. Okay, अगला question. The same thing. A proton is moving with uniform velocity of 2 into 10 to the power of 8 meter per second uniform magnetic and electric field which are perpendicular. The electric field is switched off. The proton moves in circular path of radius. Then the magnetic field B, which are perpendicular to each other. Electric field is switched off, then proton moves in circular path. Then the magnetic field. So what is the formula now? इसका velocity दे चुके हैं.
रेडियस एंड मैग्नेटिक फील्ड बारे में पूछ रहे हैं. तो व्हाट इज द फॉर्मूला? आर इक्वल टू एम बी बाई क्यू बी. हमें रेडियस पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑफ, देन प्रोटॉन मूव्स इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस, रेडियस पता है, देन इसका स्पीड पता है एंड इट्स ए प्रोटॉन. मैग्नेटिक फील्ड बारे में पूछ रहे हैं. सो व्हाट इज द फॉर्मूला? बी इक्वल टू एम बी बाई क्यू आर. मास ऑफ प्रोटॉन, वेलोसिटी ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन सब्स्टिट्यूट करो क्यू आर, देन विल गेट द रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फील्ड. ये तो सिंपल, थोड़ा लकी आर टू कैलकुलेशन सर, मास ऑफ प्रोटॉन एंड ऑल्सो डेटा आपको. I'll check the data. Mass of proton will be 1.6 into 10 to power of minus 27. Speed का value 2 into 10 to power of 8. Charge of proton 1.6 into 10 to power of minus 9. Radius कितना दिया है? 1.6 into 10 to power of minus 5. तो solve करोगे तो will get this our answer. Sir, what about electric field? Yes, electric field बारे में information यहाँ पे दिया है, but what I think is it's switched off. जब आप switch off करेंगे तो then only due to magnetic field the proton will move in a circular path. B bar and velocity of proton इस तरफ दे देंगे, so it will move in a circular path. ये वाला हुआ proton and it is moving in a circular path. Sir, what about electric field? Electric field यहाँ पे switched off हो चुका है ना, so it's no use for us. Then we will provide required centripetal force F equal to QVB, and that F equal to QVB will provide required centripetal force. इसको हम solve करने पर हमें ये फॉर्मूला मिलेगा. आपको यह फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा. मूविंग चार्जेस इन मैग्नेटिक फील्ड. So the topic belongs to the moving charges and magnetism. And F equal to Q V bar cross basic formula. And subtopic R equal to like a charge particle moving in a circular path based on that. अगला क्वेश्चन ले लेंगे. डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द कैपेसिटेंस. अगर आपको डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस पूछ रहे, व्हाट इज द बेस्ट थिंग इज लाइक व्हाट इज अ इक्वेशन यू कैन यूज. कौन सा इक्वेशन यूज करना है? सो यू हैव मेनी थिंग. टाइम कांस्टेंट लैम्डा इक्वल टू आरसी. अगर आपको इसके बारे में पता है देन बिकॉज एम्पियर भी है यहाँ पे, तो डेफिनेटली दिस इज यूजफुल. लैम्डा ए तो इसका डायमेंशन हुआ टी. रेजिस्टेंस का डायमेंशंस. voltage R equal to V by I. Capacitance. So I काम करेंगे adjusting like this. voltage के बारे में तो then again we'll go for the potential. Then work done is equal to Q into V. Charge into potential difference. Work done का dimensions पता है हमें. Force into distance. Charge का dimensions तो current is equal to charge by time. So this will be I into T. So voltage का कितना हो? Fs I T. Okay, agree this. So voltage यहाँ पे लगा देंगे हम. तो voltage का dimension हुआ Fs I T into A वाला I and this is C. So Fsc by I square T. T means time. Lambda का भी time है, dimensions. So C का dimensions now I square T square force and this will be displacement XL. Dimensions हुआ A square T square. फोर्स का डायमेंशंस क्या है? मास m1 l1 t minus 2. डिस्टेंस का डायमेंशंस l1. So A square
t to power of -4 m -1 l -2. So इसका फॉर्मूला m -1 l -2 t -4 a square. t to power of 4 plus 4. ऑप्शन सी. अगर आप एक थोड़ा टाइम कांस्टेंट इज इजियर आपको. एनी अदर थिंग इज देयर q by v इक्वल टू q by c वो भी ले सकते हैं. वोल्टेज इक्वल टू चार्ज बाय कैपेसिटेंस. एनीथिंग आपके कन्वीनियंट. नो एक थोड़ा क्वेश्चन. एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस ऑफ लेंस इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. हम एक काम करेंगे. जो लेंस है लेंस इस तरह का लेंस लेंस इसको हम पहले ऐसे कट करेंगे परपेंडिकुलर टू द एक्सिस. इसका फोकल लेंथ क्या हो जाता है. नो दिस इज देयर. दिस विल बिकम f dash f dash. इसका f dash will become 2f. सर व्हाट इज द रीजन. इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है इसका रेडियस सेम. पहले इसका फोकल लेंथ फाइंड आउट करेंगे. f इक्वल टू म्यू -1 1 by r minus 1 by r. f इक्वल टू r by 2 म्यू -1. Then what is f dash. f dash का फॉर्मूला म्यू -1 1 by r minus infinity. So f dash हुआ r by mu -1. So r by mu -1 what we can write 2f. So when you cut the lens, this is the lens. If you cut this normal to the axis, what is the axis यहाँ पे. This axis. When you cut this lens normal to the axis, इसका focal length double हो जाएगा each part का. Then इसके बाद में क्या करेंगे हम. ये जो लेंस है ना कौन सा तो एक पार्ट ले लेंगे. इसको हम आधा करेंगे ना. ये आधा पार्ट यहाँ पे है एंड दूसरा आधा यहाँ पे है. नाउ इसका फोकल लेंथ क्या होगा. इसका फोकल लेंथ रिमेन सेम. द रीजन इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है. इंफिनिटी. ए वाला हुआ आर इंफिनिटी. तो इसका फोकल लेंथ तो चेंज नहीं होना चाहिए ना. तो व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ ईच पार्ट. इसका अगर एफ रहे तो ईच पार्ट का एफ डैश एफ डैश एफ डैश एंड एफ डैश will be 2f. This is based on ray optics. Ray optics, the topic chapter ray optics, lens maker formula. This is a question based on the equation of continuity, fluid dynamics, or fluids based on subtopic equation of continuity. A1, AV1, AV2, and यहाँ पे A2. So A1 V1 equal to A2 V2. A1 का वैल्यू कितना. पाई 2r होल स्क्वायर. V1 वैल्यू 2. A2 वैल्यू पाई r स्क्वायर V2. V2 will be 4 meter per second. Simple. A1 V1 equal to A2 V2 equation of continuity. यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है पाई 2r होल स्क्वायर. यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई r स्क्वायर. I'll take next question. Very simple. यहाँ पे आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ता है. दिस इज वेरी रेयर. लाइक ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं. ओके फाइन. नॉट वेरी डिफिकल्ट. यहाँ पे हम करंट पास करते हैं इस तरह एक्सप्लेन करेंगे. यहाँ पे जो करंट फ्लो होता है इट विल ब्रांच लाइक दिस. और बाकी बचे सो करंट यहाँ से ब्रांच. फिर दोनों कंबाइन होके यहाँ से निकल जाता है. ओके फाइन.
नाउ दूसरे पार्ट में भी द सेम थिंग, यहाँ जो करंट यहाँ से ब्रांच हो फर्दर यहाँ पे डिवाइड हो जाता है इस रेजिस्टेंस में इस रेजिस्टेंस में इक्वली यहाँ पे, और दोनों कंबाइंड होके यहाँ से आ जाते हैं। नाउ यू कैन सी क्लियरली लाइक ये जो यहाँ पे हमें जंक्शन मिल रहा है ओ, इट इज नॉट ब्रांचिंग। देन इसका सर्किट अगर आप रीड्रॉ करेंगे तो वो इस तरह सिंप्लीफाई हो जाएगा, इस तरह सिंप्लीफाई होगा। सो ये जो जंक्शन है इट्स अ डमी जंक्शन, मींस लाइक व्हाट यू सेलेक्ट इट्स जस्ट अ फिजिकल जंक्शन, it is not an electrical junction, so that's why the current यहाँ पे flow था, so it will not branch. So what is the path of current? Current यहाँ से ऐसे पाथ हो जाता है, या कंबाइन होके फिर इस तरह यहाँ से पॉइंट बी से बाहर आ जाता है। सो देन यहाँ पे जो करंट एंटर हो रहा है दिस विल अगेन यहाँ पे इट विल ब्रांच, दिस विल ब्रांच। current it will not branch like this. So resistors, so all these are resistors, कितना वैल्यू कितना है R R R R R and R। ये दोनों रेजिस्टर्स का वैल्यू कितना है 2R, 2R पैरेलल टू R R, इसका इफेक्टिव कितना होगा R 3R। सो यहाँ पे R R R R R एंड R, ये जो मैं R डाल रहा हूँ दिस इज द इफेक्टिव ऑफ दिस वन, ये वो R। बाकी ये भी जो चार रजिस्टर्स है इसका इफेक्टिव विल बी R। तो बाकी ये तीन तीन विल बी तीनों रजिस्टर्स लाइक R एंड ये चार रजिस्टर एंड दिस R, ये सभी पैरेलल है। सो लाइक दिस टू आर सीरीज दैट इफेक्टिव इन पैरेलल, सो सीरीज। यहाँ ये हम पॉइंट ही यहाँ पे रख रहे, देन टोटल रेजिस्टेंस विल बी 3R 3R, effective resistance RAB will be 3R by 2. So N का वैल्यू हुआ 3। Based on current LCT, basic projectile kinematics, 2D kinematics, projectile motion. We have projected a projectile with a speed u at an angle 60 degree, 20 meter speed. At highest point इसका speed पूछ रहे हैं, the speed of at highest point of trajectory, इसका तो u cos theta हुआ 20 into cos 60, so 20 into 1 by 2, 10 meter per second, 10 will be our answer. A simple formula based. ये तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, इलेक्ट्रिक डाइपोल शो नहीं आता, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन एट अ डिस्टेंस 2r, ईएनबी के बारे में पूछ रहे हैं। नो डाइपोल, सो दिस इज डाइपोल, यहाँ पे डाइपोल है, बड़ा वाला डाइपोल हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे पोटेंशियल कितना ई नॉट मी नॉट, तो ई नॉट का वैल्यू व्हाट इज ई नॉट ऑन द एक्सिस विल बी 2kp by r cube। This is on axis, on the bisector, on the bisector का कितना वैल्यू kp by r cube।
बट यहाँ पे आर का वैल्यू कितना है, 2r। So kp by r cube into this is 1/8। kp r cube कितना वैल्यू विल बी e नॉट by 2/8। तो कुल मिला के दिस विल बिकम 16 on the bisector। This is on bisector। Similarly पोटेंशियल का वैल्यू, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल विल बी kp by r square। This is on the axis। on the bisector इसका तो वैल्यू विल बी 0 होगा, because this everything is equipotential। So options e naught by 16। यहाँ तो पोटेंशियल, जीरो पोटेंशियल हर जगह यहाँ पे। इफ यू ड्रॉ दिस लाइन एट ऑल पॉइंट्स ऑन दिस बाइसेक्टर, पोटेंशियल इज जीरो फॉर डाइपोल। द प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डाइपोल। Now light of wavelength is incident on a metal of work function, the maximum kinetic energy। यहाँ पे हमें एक मेटल है, लाइट इज इंसिडेंट ऑन इट, इसका वर्क फंक्शन कितना है मेटल का, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द इलेक्ट्रॉन्स विच आर एजेक्टेड दे आर हैविंग काइनेटिक एनर्जी k1। So what is k1 equal to sc by lambda minus work function। Now e like, अब इसमें क्या करेंगे, वेवलेंथ, वेवलेंथ बिकम्स लैम्डा बाई 2। इसका वेवलेंथ अगर लैम्डा बाई 2 बन गए तो देन व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स, sc by lambda by 2 minus work function। So 2 sc by lambda minus work function। इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी इसका k1 का वैल्यू कितना है, 2e। हम यहाँ से sc का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट sc by lambda। वर्क फंक्शन कितना हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो sc by lambda का वैल्यू कुल हुआ 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो k2 इक्वल टू 2 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन दिस इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इवन अगर आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उतना याद नहीं रहे तो भी, अगर आपके पास एक फॉर्मूला है तो यू कैन मैनेज। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। exam is all about getting marks। Nothing to do with your, no need to show your talent। It's all about, no need to show, just you want marks, somehow you have to get marks, no? So prepare yourself for exam in all sense। The target is right to get a marks। Knowledge should be there, formula should be there, tricks should be there, but you should really bring all those things। जो भी हम सोचते हैं मार्क्स के लिए सोचना पड़ेगा हमें। अगला क्वेश्चन ले लेंगे, द मैक्सिमम परसेंटेज इन द डेंसिटी ऑफ ए वायर। सो डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम विल बी pi r square l। d rho by rho equal to dm by m, then 2 dr by r dl by m। इसका सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, मास का 0.003 by 0.6, 2 dr रेडियस 0.01 by 0.5, dl 0.05 by 10। Percentage error will multiply this all these values with the percentage error, then we'll get some basic formula। इसका कैलकुलेशंस विल बी 5%। प्लीज वर्कआउट, आंसर 5% आ जाएगा। ओके फाइन। दिस बेस्ड ऑन द एरर्स जनरल फिजिक्स।
एरर कॉन्सेप्ट। यहाँ पे टॉपिक नेम भूल गया था मैं, सो दिस इज द मैटर एंड रेडिएशन। सब टॉपिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। No. Ball of mass attains when drop. If the density of ball is twice the density of liquid, viscous force on the ball when it attains terminal velocity. यहाँ पे बॉल है, तो यहाँ पे बाइंड फोर्स, viscous force mg. The density of liquid is twice the density of the ball. Find the terminal velocity. इसके पूछ रहे हैं. So what is the terminal velocity formula? 2 in terms of mg. There's one more thing. तो यहाँ पे हम एक काम करेंगे, fb plus v equal to mg. Bind force will be rho l, volume v naught g. Viscous force कितना? Viscous force on the ball when it attains terminal. Is asking only viscous force. Density of the ball will be two times of it. So then sigma v naught g. What is the mass of the ball? Sigma v naught. So this will become 2 mg plus f equal to mg. Maybe it is moving up. I got negative viscous force. Okay, it will be downward. Okay, then this will be your answer. Concept based on the viscosity and Stokes law. Calculate the radius of helium ion in the first excited state. R equal to n square A naught by Z. And this is a typical formula in the first excited state. First excited state means if this is the helium, it will have the ground state. Next, it will have the excitation. So this is the electron यहाँ पे A वाला हुआ nucleus. This is the electron. No, its energy is asking. So what is n equal to 2 square? A naught value will be 0.53 Armstrongs. Helium का value Z equal to 2. 1.028. 2 into 0.5, 1.06. This will be your answer. Formula. Radius of the electron in nth Bohr orbit. A formula आपको याद रखना पड़ेगा. Speed, energy, radius, angular momentum, time period, magnetic field. ये सब फॉर्मूला से अगर फॉर्मूला से याद रहे तो ओके, यू कैन मैनेज दिस वेरी इजीली. अदरवाइज ये हम डिराइव नहीं कर सकते, वेरी लेंथी. एटॉमिक फिजिक्स, इवन माई सेल्फ 2 minutes आई कांट डिराइव. अगला क्वेश्चन ले लेंगे. नॉट गेटिंग सिंक्ड. A massless tube 1 meter is filled with a liquid of mass 2m. About passing through is 1 end and with angular domain. Force exerted by liquid on the other end of the tube is. यहाँ पे ट्यूब है. About 1 end, it is rotating. It is spinning. Let me draw the diagram. Yeah, here it's rotating. And every time if force exerted by liquid on the other end of the tube. Yeah, यहाँ पे liquid है. So this everything is liquid. What is the mass of liquid? 2m.
Is asking the force exerted by this liquid at other end. This is the force. We have to calculate force on this. Here, what happens? The pressure will be maximum here. The reason for that, the complete pseudo force which is acting here, mass to omega square, at what distance it will be L by 2. Then the liquid, what happen will, the pseudo force will press it. So if you take the complete liquid column, this will be PA and this is pseudo force. So force will be this PA should be equal to 2m omega square L by 2. Force exert liquid on the other end. So it's asking directly this force only. So 2m omega square L by 2. So omega bar में पूछ रहा है. So this will be omega will be F by ml. Length of the tube is 1 meter. So we'll get answer 1. So this is based on the fluid statics. Little bit tough question. So यहाँ पे आप देख चुके हो like 24 questions यहाँ पे मैं okay, the paper analysis in the 24 questions, around 4 are tough and around 12 are very easy and 8 are moderate. I think this is our typical JEE mains question. So the paper analysis will be out of 25 questions, 4 are tough, 12 are easy, बाकी बचे से कितना 69, 9 are moderate. So for 99 percentile, if you can score around 65 marks for physics, I think manageable. Okay, all the best students for the 23rd. There's a 22 shift, no? For 23rd, what we're having, it's all the best. Then 23rd, like I'll upload the paper since I'm working in college, so I have to be only evening. I'll get a time, so maximum I'll try my level best to upload the 23 paper. Will expect it to be little bit let it be easy. I'm not the paper setter. I'm praying that okay, let the paper be easy and like all the best for 23rd shift people and 24th shift also. Thank you all of you. Okay, बच्चों आज like हम 22nd जनवरी शिफ्ट पेपर डिस्कस कर चुके थे. तो आपको पता है like एज ए टीचर सब माय एक्सपीरियंस मैं सॉल्व कर रहा हूँ. बाकी इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जहाँ पे हमको फॉर्मूला याद नहीं रहे तो इवन मुझे भी डिराइव करना पड़ता है. तो जस्ट आप अपने आप सोच लीजिए लाइक आप एग्जाम लिख रहे, आपको कॉन्सेप्ट याद है, आपको उसके पता है, आप समझ चुके, फिर भी आपको फॉर्मूला याद नहीं रहे तो आप कुछ नहीं कर सकते. द क्वेश्चन यू हैव टू लिव इट. या वहां पे आप फॉर्मूला डिराइव नहीं कर सकते. तो यहाँ पे व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द मेंस. हर एक क्वेश्चन का आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए. फॉर्मूला याद रहने के लिए क्या क्या कर सकते हैं तुम. यू हैव टू रीड, मेमोराइज. दिस इज रिक्वायरमेंट ऑफ द मेंस एग्जाम. अब आप एडवांस में चले जाओ, वहां पे भी 70% ऑफ पेपर बिना फॉर्मूले आप यू कैन नॉट सॉल्व. ऑफ कोर्स एडवांस के लिए क्या, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, फॉर्मूला और थिंकिंग एबिलिटी, द आइडिया ग्रास्पिंग. मेंस के लिए छोटा सा आइडिया चाहिए. आप इतना बड़ा बड़ा थिंकिंग नहीं चाहिए, छोटा सा आइडिया. सो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, फॉर्मूला, देन हाई स्पीड कैलकुलेशंस, देन स्मॉल आइडियाज. तो यहाँ पे 25 क्वेश्चंस में अराउंड 4 क्वेश्चंस आर रियली टफ. थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा. ओके, लीव दैट 4 क्वेश्चंस. देन बाकी 20 क्वेश्चंस आर रीचेबल. और 20 क्वेश्चंस में अगर आप देखें तो अराउंड 18 क्वेश्चंस यू नीड फॉर्मूला. तो दिस आर रिक्वायरमेंट. आप जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, जब तक आप सोचेंगे नहीं, यू रिजल्ट आना मुश्किल है.
कुछ भी कर लो तुम, 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, लगे नॉट पॉसिबल ना। जब तक आप पढ़ोगे नहीं, रिजल्ट नहीं आएगा। सो जो आप पढ़ते हो वही कॉन्फिडेंस है। जो आप कॉन्फिडेंस है उसी से आपको मार्क्स मिलता है। दिस इज रूल, गोल्डन रूल ऑफ द जेईई मेंस। बाकी तुम 10 दिन, 12 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन, 200 दिन, 1 साल, 2 साल, 3 साल, बिना पढ़े कुछ नहीं होता है। जैसे गोल्डन रूल। तो बिलीव इन योर सेल्फ, हार्ड वर्क, बिलीव इन हार्ड वर्क। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तो आपको सफलता नहीं होगा। बिना मेहनत करे नॉट पॉसिबल। जो बच्चे 2026 एस्पिरेंट्स है, स्टार्ट वर्किंग हो। आई एम नॉट आस्किंग डेली 20 आवर्स, एटलीस्ट 9 आवर्स, 6 आवर्स डेली। 6 घंटे पढ़ो या 7 घंटे पढ़ो या 5 घंटे पढ़ो, 1 घंटे पढ़ो यार, कुछ नहीं होता है। बिना पढ़े लास्ट एग्जाम 1 मंथ में उधर इधर, ये नॉट पॉसिबल है। डोंट बिलीव इन एनीथिंग, जस्ट बिलीव इन हार्ड वर्क। जब तक तुम नहीं पढ़ोगे, सिलेबस इतना ज्यादा है, लेके 2 साल, जो जो 2 साल में तुम नहीं पढ़ चुके हो, लाइक इज इट पॉसिबल? 10 days, 5 days, नॉट पॉसिबल। नो, सो बिलीव इन द रूल्स, नेचुरल रूल्स, लाइक जो मेहनत करता है उसी को सफलता आता है। नॉट पॉसिबल ना। सो आप टेक द रियलिटी ऑफ द पेपर्स, स्टार्ट सॉल्विंग। जो भी आप लगे वो आर प्लानिंग फॉर द अप्रैल शिफ्ट, यू हैव ए टाइम, अभी 2-3 महीना है। स्टार्ट रीडिंग। Okay, all the best kids for 23rd and 24th shift. Okay, tomorrow we'll discuss the 23rd and morning and evening shift papers. Thank you all of you. Thank you. Thank you.